preferable, and 1 is very weak and emaciated, and 9 is obese. So a scoring level of 6 to 7 is preferable before coming to the winter. And other things, that the animals should be dewormed, deloused, and vaccinated against preventable disease. And another important aspect of preparedness is we should have a preparation of for various nutritional requirements for the livestock. Suppose in Ladakh, we used to store our food before coming, before the winter season comes, and Ladakh is cut off from rest of the world. So like that way, we should have a preparedness to a stocking of livestock food also in the form of silage, hay, complete feed block, urea, mineral molasses, and we can also stock agriculture produce like turnip, kale, carrot, which are found to be very good for animal feeding during winter. And then again, for the comfortness of animal, we should again store bedding materials which will provide comfortable to the animal, and the bedding material should be in abundance, because in livestock the bedding material has to be keep on changing every 2 or 3 days. So the bedding material comes in the form of tree leaves, grain husk, and another thing is supplementary feeding like urea, which provides nitrogen and in turn provides protein converted to animal protein, and this should be stored in the form of mineral block, and this can be used for pregnant ones, for young ones, for growing stocks. And another important aspect in preparedness is the farmers needs to be sensitized, and all the farmers should be sensitized and should be given a hand-on training before the winter season comes. So if this preparedness is not done, then this calamity may exist, like thousands of goat you can see dies in the winter in Ladakh, especially in Changthang region. You can see this is also again a picture in Mongolia, where you can see lots of dead carcasses of the goats. This is another picture in Korzok, where thousands of livestock dies due to erratic snowfall, and there was no preparedness. So what is the effect of cold temperature on livestock? So first thing is the cold temperature makes cattle or livestock to grow thicker winter coats, and all the blood supplies goes to the extremities in the production of body heat. And this is accomplished by increasing their heart rate and thereby increasing the respiration and increased blood flows to the extremities. Although this is a physiological response, but it helps the cow to encounter extremely low temperatures and to provide a relative comfort to the animal. So how this comfort, how this energy is cope up? This energy is cope up by 20% more feed requirement of the live animal during cold winter. So you can often see that there is a production depletion. Milk body growth is very slow during winter. The milk also goes down, especially the dairy animals. They shows a very great effect on the milk production, and this is mainly the diet, which especially in winter we have very poor diet. We don't have that green and lush grasses, and we have temperatures, freezing temperatures, and all the energy is diverted toward heat production. So these are the animals during heavy snowfalls. You can see this animals are still alive, but they're coping with this temperature by using extra energy. And sometimes when there is poor nutrition and poor management, it leads to the death of the livestock. So what is the effect of cold stress on metabolic physiological adaptation?
So there will be an increased dry matter intake to raise the heat production, and there will be an increased rumination in all the ruminants, and obviously the gastrointestinal tract motility also increases during the winter season, and there will be an increased rate of passage of feed and liquid in the rumen and digestive tract, and there will be a loss of body weight, use of body tissues to maintain energy level in scarcity of feed, which will again affect the immune system, and there will be again increased body oxygen consumption, cardiac output, all the bad hormones like adrenaline and cortisol will be released, and there will be increased lipolysis, glyconeogenesis, then increased hepatic glucose output, then there will be decreased rumen volume, decreased diameter digestibility, then decreased insulin response to glucose infusion. And for dairy cows, there will be again effect on the milk production, mainly chilling effect of udder and uncomfortness to the animal. So what will be the effect of cold stress on production system? So usually we measure the production of livestock in terms of growth, milk production, fiber and wool production. So in addition to this, in addition to the stress of the winter, the animals suffer other stresses like pregnancy. Mostly in the breeding season starts in October, November, and the gestation period, that is pregnancy, is seen in the month of October, November, that is no, December, harsh winter, and there will be kidding and lambing in mid-winter like January, February. So there's a stress of nursing, and the fiber and pashmina fiber and wools are have peak growth during winter season. All this put extra stress to the livestock, and so along with this stress and scarcity of nutrition during winter season, there exhibits lots of production losses. We often see abortion, especially in Changtang. We have seen abortion in sheep and goat, up to 20 to 30% abortion cases. Normally less than 10% is admissible, but we see 30 to 40% abortion in winter in Changtang, and there's an impaired immune system, and animals are more prone to diseases like pneumonia and others gastrointestinal infections, and due to cold there is a poor digestion and slow growth, and in dairy animals, even in goat also, which produces milk, there will be a drastic reduction in the milk production. And these are the effect done to the production system, and to the young ones, what is the effect of cold? We have seen, especially in Changtang, that there are 40 to 50% kid and lamb mortality in most of the Changtang area, and the main reason for this mortality is hypothermia. And why this hypothermia in young ones? Because in young ones, that is before 3 months, the thermoregulatory mechanism in newborn animals are not that much developed, either absent or it's very low. So the young ones are not able to produce heat to cope up with the extreme cold, so they naturally die. And the system of rearing in which they are kept is not that much comfortable. So most of the lambs and kid mortality are due to hypothermia. And again, if there is snowfall, then it exaggerates the hypothermia, because precipitation adds to the negative effect on calf or young one survival. So the most how to determine this hypothermia? It's a simple technique using rectal temperature, and when there is mild hypothermia, the body temperature is below
100 degree Fahrenheit, and when there is severe hypothermia, the body temperature drops below 94 and vital organs becomes cold, and signs of life are very hard to detect if the temperature falls below 80 degree Fahrenheit. So these are the effect of cold stress on the adult and production on adult and its production system and the young ones. So how to manage this cold? Before going to that, we have to see what is the system of livestock rearing in Ladakh. So there are 3 system of livestock rearing. One is extensive, then semi-extensive, then intensive. So Ladakh, you can see most of the sheep and goats, mostly sheep, goats, yaks, they are reared on extensive method, and the animals are reared on vast pasture land. They don't have proper housing and they don't have proper feeding schedule. Animals are put on grazing, and mostly the nomads are on migratory. And the second is intensive system of rearing, where we can see dairy cattle, backyard poultry, and we can also add this double hump camel comes in semi-extensive. Why? Because in the winter they are put on grazing land, and in the summer they are put back at the house. So these 2 animals, especially this backyard poultry and dairy cattle in Ladakh, we find intensive system of rearing. So the management in extensive system and intensive system during winter is totally different. So first thing in the management comes housing management, and under housing management in the extensive system of rearing, we find temporary stone walling. We call it open luss, and this is okay for summer season, but during winter, especially young ones, pregnant and sick animals, they are exposed to extreme winter and they do not cope up with it and they die naturally. So this young one, at least during winter season, though it is said that pashmina is grown in extreme weather, when you put the animal in without a house, or when the animal are exposed to extreme temperature, then only the fiber, finer fiber grows and the finer wool grows. But it is applied to healthy animals, but these young ones and pregnant and sick animals, they need a proper shelter during winter, and this shelter should be spacious. It should be properly ventilated and with bedding material. In Changthang and in sheep and goat rearing, we have seen that the shelter which are provided to the lambs and kids are just a burrow dug in the earth with very or no ventilation at all, though it provides warmth, but there is no ventilation, and due to respiratory problem, the young ones dies there also. So a proper lamb and kid shelter should be spacious, and the pregnant and sick animals should have proper roofing to protect it from snow, and there should be a space for pregnant and sick animals in every, farmers of Changthang, what I feel, to protect, to check the mortality in adult ones and abortion. And under coming to management under intensive system, especially our local cattle and poultry, we should not have, we should check the fluctuation of temperature, environmental temperature on the animals. Suppose if it is warm during daytime, then the shed should be opened, and you should allow the animals to be in the outside, in the outside the house, and we should check for temperature continuously, and a comfortable zone which is between 18 to 27, I can say around 10 to 15 degree in Ladakh condition is needed.
And what I feel is nowadays we have readily available that temperature, clock like temperature which tells the temperature of the room temperature indicator. We can put out it's very cheap, around it comes to around 300-400 rupees. You can keep it in every animal house and you can check the temperature, and it should not be less than 10 degrees centigrade. 10 to 15 degrees centigrade Ladakh condition is optimum. And while constructing the house, animal shed, it should be south facing, and with mud wall is very good, preferably double walling with straw in between. Then Chuk Saab has told yesterday that solarized housing using greenhouse technology, that is very good and a better option in Ladakh condition. But we should, while managing this livestock, we should always keep in mind that there should be a proper ventilation, and there should be easy disposable of dung material. Normally in cattle we get huge lots of dung every day. So what in our station at Stagna we have developed an animal house model in which there is proper ventilation made up of wall south facing, and for dung material to dispose we have a outlet at one corner of the shed, from where you can just push the dung material directly into the manure pit. And the next important aspect is health management. And as I told already that preparedness is very must. And the best thing is, the first thing is, the animals should be fed well during autumn season when abundant agriculture waste, agriculture grasses, fodder grasses, green grasses are available, and you should try to maintain the health score between 6 to 7. And another important issues in health management is, before the winter falls, the animal shed should be disinfected properly so that there may not have any parasitic ectoparasite infections. Especially in Ladakh, we have seen lots of this louse infestation during winter season, when the animals are kept continuously in the shed. And the best thing in winter is vaccination. The animals are free, so vaccination for certain diseases like FMD, clostridial disease, PPR for sheep and goats, then brucellosis and many more diseases should be preferred, especially at the beginning of the winter. And deworming, normally the animals should be dewormed every 6 months, or when there is endemic of this worm infestation, then every 3 months. So in Ladakh we prefer deworming every 6 months, and one deworming should be preferably done with broad spectrum anti-helminthic at the start of the winter, that is in November. And then again, another problem of ectoparasite, that is louse infestation, is due to improper dipping during summer. We have seen people, dipping is done to get rid of this all parasites, ectoparasites like ticks, louse in sheep and goats. So there is improper dipping, that is the proper concentration of medicine is not used, due to which the ectoparasites, they do not die and they remain on the skin of the animal, and when the winter comes they multiply very vigorously. And another health managements like hoof trimming, overgrowth, horns, then all this management system should be done before the winter comes. Then what are the protective measures to prevent the effect of cold stress for dairy cows? So for extensive system, sheep and cow, I told you. Now for intensive system, like in dairy cows, use of blankets cover, especially for milking cows, pregnant cows and calf is preferable. You can easily use a blanket and use it as a jacket for the animal. It provide warmth. Then we have to increase the burn temperature by use of heating
And heating doesn't mean that you should burn bukhari or something which produces smoke, and it add to the problem. The animals is already having certain stress, and the smoke also creates respiratory problems like pneumonia. So it should be avoided. Increasing the temperature is by means of solar or electrical, which doesn't burn anything, which doesn't produce any emissions. So again, important aspect in the housing of dairy animals is we have to reduce the humidity to ensure better ventilation. And we should always prevent excessive moisture in sheds. Suppose when there is heavy snowfall, we should clear the snowfall immediately, otherwise it will melt, and the roof dripping and ground freezing phenomena comes into act, which provides uncomfort to the animal. Then ventilation, especially normally the ventilation should be should be closed in the night and in the afternoon period when there is ample supply of sun, when the temperature is okay, good, then we should provide ventilation, and ventilation should be cross ventilation, and it should be provided mainly in the afternoon. You can open the windows for 2 to 3 hours to provide sufficient ventilation, and the excess ammonia produced from the dung and the urine material to be get off. And watering is another management system during winter, and we should try to use less water in the burn, and we should use normally in Ladakh we should use dry leaves and straw bedding materials. Even we can use soil in Ladakh, and so that it can be removed easily without using any without the production of any humidity or moisture. And during the daytime, especially, I've already told that the animals should be kept out of the burn, and proper bedding material. Then one thing we should always observe is that the waterers or water tank which are used for watering the dairy animals should not be frozen, and lukewarm water should be always provided for drinking purpose. Normally what we do, we used to put cold water to the animal during winter. So what happens, this cold water needs to be heated up by the body, and for that you need extra energy, and already the animal is going under cold stress, and when you are putting more water, that means you are losing more energy, and in short you have to feed more. So to reduce your to improve your economy or to reduce your burden, you should provide lukewarm water to the animal. And the teats, that is the teats of the cow should be very dry. You should often make it dry, so that because one thing we have seen in winter, that anything which is wet, it attracts more cold, and so after milking or after milking the animals, after dipping, that is washing the tit, it should be always clean with towel. Normally in Ladakh we never used to follow these simple methods. And the now presently what I prefer is to use milking machine, which doesn't need any wetting or dipping, and for clean hygienic milk, for both for the customer owner and for the animal. This I will show in my next slide, coming slides. There are so many single bucket and small milking machine available, and in winter when we just put our animal outside the barn, leave animals, we should always see that if there is any frostbite, because this mostly sometimes this frostbite, especially to the extremities, legs of the animal, go unnoticed, and it creates huge problem after several weeks. And coming to young ones,
there is we should use heat lamps than warm blankets, and blankets are more comfortable for calf and young ones. uh, it prevents the radiant heat loss. Then thick straw, um, and additional amount of feed starter like milk replacer or milk that a calf would need to eat compensate for extra energy used to keep warm during cold weather. That means we have to give extra feeding to the calf, to the growing calf, to compensate with the heat loss. And uh, one thing in for the young ones, we should always check that the calf diet should not be done. Normally in Ladakh, we used to just I mean, put the calf for suckling for half an hour and just leave it. But in winter, special care has to be taken. It has to be feed with barley, with extra milk replacer like concentrate. We have to give if you want your calf growth to be normal. Then one more important thing is for the growing calf, we should give water 3 times per day for a minimum of 30 minutes each time, so that so that the calves have ample opportunity to drink, because the growing animals, young ones, they need more water, and we should see that the water should be lukewarm. And coming to the ventilation of this cow shed, one thing is we should take is the ventilate. I mean, the windows should be very loose, and it should be easily fixed. It should when it opens, huge space comes out. Proper sunlight comes out. When it is closed, proper closing is done. So this inlet should be adjustable, and it should be very easy to open and closed. Normally windows in Ladakh, it's very difficult to open and it's very difficult to close. So we should take special precautions in in constructing such kind of windows, which can be easily opened with wide space. So you while constructing this animal shed, this should be taken care of. So another thing is we can use this clothes like for the calf, jackets, that is head collars. This can be also used for the dairy animals. It protects a lot. Now, the last and the important thing during winter is feeding management. So in Ladakh, though we have scarcity of feed in summer itself, so winter, the livestock, all the livestock, they undergo a very harsh stress, and most of the livestock, especially in extensive like sheep and goat, they die due to starvation rather than cold. So when the whole pasture area is covered by snow, very thick snow, and the animal is devoid of feed for several weeks, then the animal dies. When there is no reserve, pasture reserve, when and lakhs of animals cannot be fed all of a sudden, the roads are closed and the supply is also difficult. So this feeding management has a great role to play in the management of livestock of Ladakh during winter season. So broadly speaking, this feeding of livestock is divided into roughages feeding and concentrate feeding. Roughages, as you know, this is all green, and it has protein less than 18%, and it has mostly made up of this green fodders, and fiber content is very high in roughages. And concentrate feeding, it is the building block. Protein content is more than 18%, and it gives energy, it gives protein to build the muscles, it gives protein to for the production of milk and meat, and all these things. And other things are pregnancy rations.
then nursing mother rations, maintenance rations, then production rations. So many feeding schedules are there as per the requirement of animal. And the temperature, ranges between for an animal 65 to 75 degrees centigrade. And when there is a loss in increased energy loss in the surrounding temperature, we have to compensate by giving extra calories. So winter, the demand of feed is more by the animal. And we should give balance, especially fortified, supplemented and protein ingredients like whole cotton seed, cax becomes very important. And apart from this, extra energy rich grains, especially this barley, should be provided for the livestock. And another important thing is lowest critical environment temperature, which vary according to species and researchers. But this livestock can tolerate up to 20 to 32 degree Fahrenheit without any additional energy demands. So every requirements for an animal, energy requirements for an animal, it increases by 1% for every degree below the LCT. So it is more comfortable for indoor feeding, but indoor is not advisable because the ammonia concentration rises in the indoor feeding. So outdoor feeding is more preferable. And uh, and any changes in the dietary, that is increase in the concentration or in the roughages, that should be met gradually only. So in the extensive system, we have grazing management, like feeding management. In intensive, we have grazing management, and there should be a grazing, rotational grazing. Though in all the extensive system, they are following old traditional rotational grazing, but supplementary, but it should be followed strictly without any damage to the existing pasture land. Then there should be supplementary feeding with concentrates. Then another methods, newer techniques like complete feeding, pellet feeding, silage feeding, and community feed banks, which stores all this pellet and silage, should be kept to minimize the damage in the winter. So coming to the feeding management, newer technologies are coming. I will just elaborate 5 minutes. Give me 5 minutes. I will just tell you what is complete and silage feeding. So these are, though it is not new technology, but it is very newer to Ladakh. This complete feed, what is complete feed? It encompasses all the roughages and concentrate. Suppose an animal need protein, carbohydrate, then oils, then all mineral mixtures, vitamins. So in complete feed block, we mix all the ingredients, and we fashion in such a way that the animal will eat only one food, that we doesn't need any green grass to feed or concentrate to feed separately to the livestock. So we feed only one complete feed, which contains all the nutritional requirement of the animal. So this is converted into blocks. It may be complete feed block, converted into pellets, that is we call it complete feed pellets. So it consists of all the nutritional requirements of a particular species of animal. So, and it's very easy to store during winter, and it's very easy for transportation. Normally in Changtang we have seen that when the government supplies fodder to the nomads free of cost, but they are not able to bear the cost of transportation itself, because one truck can load up to 17 quintals only, 17 quintals of grasses, on dry grasses only. How? But this pallets and feed blocks can be loaded 3 times more. So same, the transportation cost is reduced drastically. So another is silage.
So what is silage? Silage is very famous. It is biryani of livestock feed, and it is nothing but a green material which is produced by controlled fermentation of the green fodder, that is crop retaining the high moisture content, and it is put to ferment in shallow pits, shallow bags, or drums, or various available technologies are available, and it is kept for fermentation for 3 months, and it is opened in the winter when the peak time arises and fed to the animal. So again, another thing we can change this alfalfa grass you have seen is famous in Ladakh, but transportation cost. So we can convert this alfalfa cubes using different machines into cubes. We can convert it into alfalfa pellets. Then another option is hydroponic grass. It is coming in Ladakh. Our KVK Kargil is going for this option also. Then alfalfa blocks for storing. It stores the grasses without much loss of vitamins and minerals. You can see the grasses in green condition. These are the machines for fodder compressor machines and pellet, which can be well managed at community level. No, coming to general management, once again I'm just repeating, there should be young and pregnant should be given lukewarm water to drink. Lamb should be built spacious, deworm the animals, then reservation of winter pasture, then feed and fodder bank at community level is must in Changtang, which can store all these newer technologies. Then there should be a reservation of high energy feed for winter like peas, barley, oil cakes. Then culling of excess animals should be done in the, and these are the again tips for dairy cattle during winter, which I have already told. And this is the automatic single bucket machines which can be used. It's very cheap to have a clean hygienic milk production, and it also protects the animals from mastitis. It costs around 35,000, and you can milk animal 3 to 5 animals in 1 or 2 hours. So in the conclusion, I will just say that with little bit environmental modification through proper shelter management and improving body reserves, improved nutritional management, and winter feed and fodder reservation with proper health care, we would be able to cope up with cold stress and starvation of animal fest during harsh winter. So these are the work we are going on KVK Leh in the development of Ladakh agriculture system. We have promotion of dairy enterprise. Then we have served DST projects, which looks for breed improvement, sheep demonstration unit, then mushroom propagation. We have also taken up issues like feed and fodder for livestock, in which we are promoting complete feed, silage, concentrate, maize, oats, and other using locally available ingredients. We are also propagating trench farming, low tunnel, mulching, various designs of greenhouses, then large scale promotion of vermicomposting in Ladakh, using the vast, in Changtang we have seen so many manures are deposited and they are taken by the Himachal people. Now we are educating people, and we are developing a chain of this vermicomposting, especially from Changtang. Then value additions we are also doing, and we are also skill development training programs to farmers, entrepreneurs, youth, and departmental staff. Then we are also in the process of breed registration, like Ladakhi yak, Ladakhi donkey, then Malluk sheep, Purik sheep, then Malra. These are all livestock which are not registered yet, and we are doing in collaboration with National Bureau of Animal Genetics and Research. This is the complete feed unit, which I have told you, which I have given the pictures at our station at Stakna, and we are continuously giving trainings to the farmers. Then we have another success stories of poultry, which we have developed using a very simple housing method underground using greenhouse technology, and we have mortality less than 10% for one Raja, and the growth of the bird is very good, and within a span of 3 months the weight of the bird is around 2 to 3 kgs in Ladakh condition. And we have brought these chicks, day-old chicks, from Hyderabad in the peak November, that is winter.
It is told that poultry is not success in Ladakh, but it is very well success. It is there in our station. And this is drum silage. We give training because drum silage is more useful and more preferred by Ladakhi people. These are the all works we are doing. We have a dairy demo units. We have a sheep demo units. And Julie, thank you. Congratulations, Dr. Firoz, for doing such mammoth work on the ground. It's really commendable, sir. There are a few questions for you in the chat. कुछ हमारे एक साथी ने पूछा है कि क्या कृषि विज्ञान केंद्र किसी प्रकार की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है फार्मर्स के लिए, और हाँ और कभी-कभी उन्होंने पूछा है कि टोज जब ग्रो कर जाते हैं, लॉन्ग टोज इन कैटल, हाउ डू वी ट्रिम ओवरग्रोन काउ हूव्स? इसके लिए पहला वाला क्वेश्चंस का जवाब ये है कि केवीके जो है हमारा सबसे बड़ा काम यही है कि फार्मर्स को ट्रेनिंग देना। अभी हमने प्रॉफिटेबल डेयरिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिटेबल डेयरिंग का एक स्लॉट आया है, उसमें हम लोग 5 ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पेशली ऑन लाइव स्टॉक। उसमें हम लोग पश्मीना पे, फिर डेयरी पे, शीप एंड गोट पे 3 ट्रेनिंग, अभी 2 ट्रेनिंग्स हो गया है, 3 ट्रेनिंग्स और होने वाला है। और हम यहाँ पे कंटिन्यूसली इवन वी आर डूइंग ट्रेनिंग फॉर मंथ्स टुगेदर। हमारे बहुत सारे स्किल स्टूडेंट्स हैं जो अभी डॉक्टर विकास जी ने कल बताया था, जिन्होंने अभी ट्रेनिंग लेके उन्होंने फिर ये एंटरप्रेन्योर डेवलप किया है मशरूम के। इवन एजुकेटेड यूथ मोस्टली उसमें है, तो डेयरी के भी हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग जो है केवीके का बैकबोन है। और दूसरा जो हूफ कटिंग के लिए बोल रहे हैं, तो वो उसके लिए हूफ ट्रिमर्स आता है, नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होता है, उससे हम कट कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर जो एक शार्प नाइफ से हम जो है हूफ के क्राउन के बगैर जो बेस लेवल से आराम से जिस तरह से हम नेल काटते हैं आराम से काट सकते हैं। एक सवाल आया है कि हाल फिलहाल में नुब्रा वैली में काफी कैटल की डेथ हुई थी, अनटाइमली डेथ थी, तो और नोबडी कुड नो द रीजन। तो क्या केवीके के बारे में कुछ मतलब आपको कुछ इसके बारे में पता है या उनको अवगत कराना चाहेंगे कि कैसे क्यों ये सब हुआ नुब्रा वैली में वो बात कर रहे हैं? हाँ, हमने नहीं सुना है अभी इसका, मगर कैटल डेथ का तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। नॉर्मली यहाँ पे अगर क्रॉस ब्रीड होगा, जर्सी होगा, तो उसमें एफएमडी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर एचएस होता है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो ये 2 रीजंस हो सकता है कैटल में, एचएस या फिर एफएमडी। इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे लद्दाख में क्या करते हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होते हैं, और वैक्सीनेशन तभी होता है जब आउटब्रेक होता है, जब बहुत देर हो चुका होता है। तो वैक्सीनेशन यहाँ प्रॉपरली नहीं होने की वजह से जो एपिडेमिक बोलेंगे हम, जो ये सारे डिजीज ऑल ऑफ ए बहुत सारे कैटल्स मरने का यही रीजन होते हैं। सर 3 क्वेश्चन और हैं जो कि जिनको मैं समराइज करूं तो वो तीनों ही लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि केवीके से किस तरह से मदद ली जा सकती है, कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो क्या आप अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस या कुछ छोड़ना चाहेंगे चैट बॉक्स में, अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर? मैं अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस और वो करूँगा। केवीके लद्दाख के लिए ही बना है। हमारा मिशन ही यही है कि हम जो है यूथ को डेवलप करें, उनको ट्रेन करें। और हमारे यहाँ से बहुत सारे ट्रेनिंग्स, मैं समझता हूँ कि हर महीने में 2 या 3 ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ होते हैं, और बहुत ही सेंट्रली फंडेड और अच्छे टाइप के ट्रेनिंग्स होते हैं, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए, ना कि थ्योरेटिकल। तो हम उनको पूरा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसके साथ वो अपना बिजनेस, खासकर एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेनिंग कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस Tenzin Chosyang to summarize the talk, please. Tenzin, over to you. Julie, thank you, Dr. for showing us great diversity visual from the Ladakh and letting us know how to prepare the livestock for the winter season of the cold desert of Ladakh. And thank you for letting us know about the effect of cold stresses on the production system, such as pregnancy, stress of nursing, health deficiency, and the prevalence of abortion, especially in the areas like Changtang. We got to know how to get prepared for the season when Ladakh loses its connectivity with the rest of the world.
And we hope this information will be informative to the people residing in the province of Ladakh. Thank you very much, sir, and Juliet to all. Thank you, Dr. Firoz, for joining us. Sir, can you stop sharing the screen? Yes. Thank you, Dr. Firoz. So now moving to our next talk today, I request Dr. Nilesh Sharma. Dr. Nilesh Sharma is graduated in veterinary sciences and post-graduated in veterinary sciences, veterinary medicine, and he's PhD from South Korea. Dr. Sharma is a veterinary clinician and researcher presently working as a senior associate professor in Division of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Science and AH, SCOST, Jammu. Dr. Sharma has more than 17 years of experience in teaching, research and extension. Dr. Sharma is running various projects on production diseases, stem cells, nanoparticle based therapy, and he has hundreds of publications under his name. Dr. Sharma is an ICR International Fellow. He has been bestowed by 48 national and international award. List is so long I cannot read. It will take long to read. Long list. You can see his biodata on the SCOST website. Dr. Sharma is editor-in-chief in many international and national journals. Before Dr. Sharma take over, I would like to tell that Dr. Sharma is also running a STI hub in Jammu, and which was recently visited by Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh. And also, I would like to mention here that Dr. Sharma is COVID positive today, but he is with us for talking to us. He's taking his time out, and he wanted to participate in this workshop to talk to, commoners, people like us, or the people in Ladakh. So very welcome, Dr. Sharma today. Over to you, sir. So thank you very much. I think I am unable to share my screen. I don't know why. So can you hear me? Yes, sir. Sir, you can select the window which one you want to share, sir. Yeah, one second. Just click the share and then desktop window. Okay. Window, sir. Window. Click on window. Yeah, desktop, then entire screen, right? No, not entire screen, sir. You can select. There are two options. One is entire desktop. One is window. You can select window, and window you can select the PPT which you have opened in your. One second. Actually, I think that in Jammu there's some internet issues also another factor. So I'm just my broadband is not working. So actually I'm using my mobile. Yeah. So 1 second, I'm trying. If I will fail, then you can start at your end. Okay. Because this is maybe the internet issue at my end. Otherwise, everything is fine. So you are actually sharing the MS Teams window. You need to share the PPT window. You need not to share this browser window because we are seeing our own video. Yes. Window. Actually, in the window, it's showing only your, this our screen. It's not showing the PPT. Although I have opened this PPT. If you allow me, I can open your PPT from Yeah, here. it would be better. I think it would be better. Okay, so just give me a moment. I'll be opening your PPT from here. Yes, please. Is it visible, sir? Yeah. Okay. So I'll be working on your command. Whenever you want to navigate, just say next. I will move next. Sure. So can I start? Dr. Chandrasekhar? Yes, sir. Over to you. Yes. So first of all, it's a very good morning to one and all. And I am really highly thankful to the whole team of the STI Hub, IMTECH Chandigarh. And it's my, particular thanks for inviting me to Dr. Chandrasekhar. He was, in my close contact since long time, and he planned so many things, and we discussed for,
long time how we can, provide our best to the new innovators in the field of dairy science, or as a whole, I can say it's no veterinary science. So overall, it's really, I'm very happy to be today with you guys. But I would like to say sorry actually. If I will have some coughing and something in between, then I may be sorry, because I'm in recovery phase, more or less. But maybe sometimes some problem. So as you know, I think its title is enough to explain what I'm going to deliver in front of you guys. Entrepreneurship opportunities in the livestock sector. If I'm using the word livestock sector, it means it's a broad word. I mean, you may move towards the dairy, you may move towards the poultry, you may move towards the piggery, you may move towards the goatry. There's a lot of scope in this field. So I think before going, yeah, next please. Yeah. So before going, any presentation, we should have some questions in our mind. What I feel. So there's some questions I will try to answer from this my presentation. Why livestock is important sector for the entrepreneurship opportunities? Hope you will get some answer. What is the contribution of livestock in Indian economy? Means the livestock sector ka, yeah, I will also go in Hindi. I think there's some maybe farmers, so it will be the mixed, okay? So livestock sector का importance है क्या basically? हम कैसे entrepreneur से बन सकते हैं, इसमें कैसे develop कर सकते हैं? And before going for the word of entrepreneurs, we should also know the importance of that particular sector in respect to economically contribution in the country. What are the entrepreneurship opportunities? जैसा मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बोला, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और नेक्स्ट उसमें भी मैं डिस्कस करूंगा. Then what is the support of government of India to promote the entrepreneurship? This is very, very important. I'm very happy to share with you guys. Everybody know, no need to share even. We should know, because it's very, very important that government of India has set up a separate ministry for the dairy and you can say poultry or fishery, Ministry of Education and Welfare. So sorry, sometimes maybe my voice. So can you understand, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेपरेट मिनिस्ट्री हमारे लिए बनाई है, तो आप सोच सकते हो गवर्नमेंट कितना फोकस कर रही है इस फील्ड पर. एंड उसी के साथ मिनिस्ट्री ने बहुत सारी opportunities, I mean, in different schemes for the dairy, for the poultry, for the poultry, in the different fields. They have many schemes that farmers can get a direct benefit from that schemes. And then what are the major challenges in livestock farming? Because, once we are thinking and we are planning to go for the entrepreneurship, I think if we don't have proper database, if we don't have some negatives, some challenges, as Dr. Feroz in the previous presentations, really summarized an excellent presentation from the Ladakh. Means, if you are going to become an entrepreneur in the Ladakh, you should know some challenges before starting, so that accordingly you can prepare yourself. आपको जब तक वहाँ की मुसीबतें, आपकी वहाँ की अच्छाइयाँ और वहाँ की बुराइयाँ, उस सब्जेक्ट की, उस फील्ड की नहीं पता है, मेरे हिसाब से आपको उस एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ कि आप उस बिजनेस को और स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले you should go through and you should understand all the plus and minus. That is my concept. Sorry. Next, please. I'm trying to change the slide. Oh yeah. So as I mentioned in my previous slide, we should know the database first. If we are thinking to go for the entrepreneurship, we should have the proper database. Then from the database, you may conclude what is the scope of this field, what are the probability of success and failure of my business. So in the some few slides, मैं आपको थोड़ा सा database भी बताऊंगा
डेटाबेस में मैं आपको पूरा कवर अप करूंगा कि डेयरी सेक्टर का कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। डेयरी सेक्टर में वहां डेटाबेस से आप कंक्लूड कर सकते हो कि रियली इस सेक्टर में क्या स्कोप है। सॉरी, जैसा कि पहला पॉइंट आप देखोगे स्टैकिंग पॉइंट है, agriculture and allied. I mean agriculture and allied means including livestock and fishery, all the allied. They engage 53% of total workforce in India. It's not a small. It's not a small. 53% total workforce is engaged in the agriculture and allied activities. So means a lot of scope for the development of the countries and for the development of job opportunities. So in our country, as data is showing, about 147 million households. टोटल कितना है 147, उसमें से 100 million households they are using animal husbandry and dairying as a primary source of income, means that's about more than 65%. More than 65% households they are depend as a source of income on the dairy and livestock. And out of that 70 millions they are depend on the dairy for their livelihood. It's a big thing. यदि हम गरीबी हटाने की बात करते हैं तो हमको केवल रूरल एरिया की गरीबी नहीं हटानी है, सॉरी, हमको केवल अर्बन एरिया की गरीबी नहीं हटानी, हमको रूरल एरिया में भी जाना पड़ेगा. वी हैव टू फोकस ऑन द रूरल एरिया. If my farmers they are enough, then means our country we are enough, sufficient at the international level. So and then you can see 75% overall, 75% is a big data. Please analyze. They are the small marginal and landless milk producers. And here I mentioned 2 to 8 animals average, but frankly, if I will say, I think it would be better to say average is 2 to 5 animals. It's better. Most of farmers, we have very small number of animals. And you see, last point, why entrepreneurs, they have more scope and opportunity in this field. You can see, last about 2 years and more than 1.5 years, we are suffering this pandemic. Our economy, पूरी की पूरी economy जिसको बोला जाए ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन एक ही सेक्टर है हमारे भारत के पास. We have only one sector in our country that is continuously supporting to our country, that is the agriculture and allied sector. And even during the pandemic, the growth was remained about 3.5%. It was not a small thing. Otherwise, all the sectors they dropped significantly. Yes, मैंने कुछ हटा दिया मटेरियल, मैंने सारा रखा भी था कि इम्पैक्ट पड़ा क्या था. नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, डेयरी सेक्टर पे बहुत पड़ा था, नो डाउट एट ऑल. मैं कह रहा हूँ इट वाज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लाइव स्टॉक ड्यू टू द स्टॉपिंग ऑल द एक्टिविटीज, मैरिज एंड ऑल द शॉप्स एंड एवरीथिंग, रियली नो डाउट. बट इवन आफ्टर दैट 3.5% growth rate, it's not a small thing. So it means, sorry, next please, it has a lot of scope in the entrepreneurship opportunities. You see here, livestock only contribute about 29% of agriculture and allied GDP. Big data again. And if you talk about livestock and all farming, major contribution of the milk is milk account about 67% of total value of output from the livestock. Means जो भी इनकम है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जा रहा है मिल्क का. सॉरी, not sheep and goat or meat. You can see milk is the major. So you have lot of opportunity for the startups in the dairy sector. Clear? And not only this year, I mean since many years we are standing at the first position in the milk production. Country इंडिया, भारत, हम लोग पहली पोजीशन पर खड़े हुए हैं और जो हमको प्राउड फील होता है, बी रियली फील प्राउड. बट समहाउ
we have to think still we have to think. वो कहाँ पे थिंक करना है उसको मैं हिंदी में ही बताऊंगा. आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी बिकॉज अल्टीमेटली आई नीड टू कन्वे दिस मैसेज टू माय फार्मर्स, टू माय एंटरप्रेन्योर्स. You see the point, next one, you can see here this one. Yes, we are the first in the milk production, but still we are compromising the productivity per animal. That we have to think. हमारा प्रति जानवर जो दूध का उत्पादन है वो बहुत कम है. आप देखोगे यहाँ डेटा मेरा 4.7 kg per day, and if we will compare with some other countries like Israel, 33 kg per day, means हम अभी बहुत पीछे हैं. हम फर्स्ट तो हैं लेकिन हमको वो देखना है कि हमारे पास लाइव स्टॉक कितना है. प्रॉफिटेबिलिटी किससे बढ़ेगी? एक डेयरी वाला क्या बोलता है, बोले मैंने कितने जानवर हैं, बोले सर हैं छोटे बड़े मिला के 15-16. दूध कितने दे रहे हैं? सब दे रहे हैं ना, 3-4 जानवर तो दूध दे रहे हैं. Okay, imagine the farmer, he has about 15 to 16 animals at the farm, and he or she is feeding to 15-16 animals. As Dr. Firoz already explained that about 75% expenditure only on the feed. Can you imagine how much you will get a profit? So ultimately, we should have high yielding animals. And second important point is that, so that's, we can say, I'm not saying it is a negative, but our dairy planners, our scientists, our researchers, our farmers should also think on the productivity and second on the quality of the milk. Quality of the milk is another most important challenge. And here you can see India produces about 21% of world milk. 21%. It's not a small data. Clear? And growth-wise, if you go through, it's about 75% growth rate. And we have the target of about 330 million tons as per the Niti Aayog by the year 2033 or 34. So means this is the as a good field that you can think for the startups. And here you can again some good message from this field. India stands sorry, first in the cattle and buffalo population in the world, second in the goat population, third in the sheep, fourth in the duck and chicken, ninth in the camel. So I mean we are leading in this field. And milk, as I already mentioned. Next, please. Yeah. So this is the global scenario. You can see this is the, I've just given the data of the world and India. And if you see the global milk production, that's about 906 million tons in 2020, and that was increased about 2%. And growth rate, if you will see our about our country, we have very good growth, about 6 or 7%. It's a good, I mean. So this is the data. No need to explain. It's just for your knowledge. Next, please. Yeah. So contribution of livestock and fishery in Indian economy. Fishery is another is a very important sector. I would like to again. मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि फिशरी स्पेशली हिली एरिया है, वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो फिशरी है. ऑल्दो आई कांट एक्सप्लेन टू मच क्योंकि मैं फिशरी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फ्रेश वाटर वो बहुत अच्छा स्कोप है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इस पे एम्फेसिस भी है. And here you can see that's about GVA contribution about 24.32%. That was in 2014 and 15. Now it's about 28.63. So it's a very good contribution. And livestock, only livestock, that contribute about 4.19%. And as I told, fish production in India, it has reached all-time high, about 14.16 million metric tons during 2019-20. So I mean it's another good signal for our entrepreneurs. And here again I mentioned some fishery sector. GVA, that is the contribution, it's stand about 2,12,915 crores. That constituting about 1.24%. So this is the database, because the database is very important before starting anything. Next, please. So livestock status, just briefly you can see from the presentation, but I would like to just focus on the second point. Second point को आप थोड़ा सा focus करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा very interesting fact.
क्योंकि जब कोई भी इनोवेटर होता है ना, जो मैं जानता हूँ, व्हाट आई फील, जो स्टार्टअप पे जाता है ना, वो बहुत छोटे से पॉइंट को पकड़ता है, जस्ट बेसिक पॉइंट को पकड़ता है, उसको लेके दे थिंक आई शुड वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट एंड ही और शी हैव इनफ कॉन्फिडेंस टू गेट सक्सेस। यहाँ पे आप देखिए सेकंड पॉइंट में कि लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन 11.19% इंक्रीज हुआ है। कहाँ पे? अर्बन एरिया में, मीन्स सिटीज एरिया में, सेमी अर्बन, अर्बन, और एज कंपेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में ओनली गांव में 4.56% ग्रोथ नोटिस हुई है, और अर्बन एरिया में डेट्स मोर देन डबल। इट मीन्स कि अर्बन एरिया में डेयरी सेक्टर और लाइव स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये एक टुवर्ड्स बिजनेस जा रहा है, नॉट एज ए फार्मिंग, टुवर्ड्स द बिजनेस। तो it's a good, I mean, opportunity, and it has many more entrepreneurs avenue in this field. Next please. Yeah, if it will go longer, then please you can stop me at any time. So total livestock and poultry wealth, you can see here. I will I will just briefly, I will try to convey you. You see, it's a good sign. This STI have focused on the Ladakh or in hilly region in J&K. You see here sheep percentage change. I mean, it's a good sign. Population of sheep has increased. Sheep and goats. It means, or if you are talking about hilly area, या तो हम लोग मतलब पहाड़ी एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे जंगल ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ कि शीप और गोट से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। क्योंकि इसके पहले मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ, डॉक्टर फिरोज, he has highlighted the really a very good points, practical points. उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। उनने ऑलरेडी हाईलाइट किया था कि फीड एंड फॉडर इज द मेजर इशू एंड शॉर्टेज, एंड अनदर इज दैट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो आपके पास शीप एंड गोट है, आप उसको जो है ग्रेजिंग करवा सकते हो, दैट इज द बेस्ट, यू कैन मूव इन दैट डायरेक्शन। अदरवाइज you can go for the dairy animals, no doubt at all. I mean dairy animals means particularly if I am talking about the cattle, but उसमें मैं आगे बताऊंगा, यहीं पे सारा फिर रिपीट होगा, then it will take more time. Next please. Here you can see their dairy animals and poultry wealth. ये तो जस्ट मैंने हाईलाइट किया परसेंटेज चेंज। इस पे आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ आप देखोगे कि मेल की पॉपुलेशन कम हुई है, कैटल में आप जाओगे फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ी है। इट मींस इट आल्सो गिव सम मोर इंडिकेशंस। आज की डेट में फार्मर्स दे आर वेरी स्मार्ट। इवन या जम्मू में आप बात करोगे तो मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंटेशन इज नॉट, आई मीन गुड, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स उस पर्पस से अपना प्रेजेंटेशन है। एक फार्मर मेरा एंटरप्रेन्योर बोलते हैं सर आई नीड अ सेक्स सीमेंट but it's very expensive. It's per stroke cost about 14 or 1500 rupees. So could you manage for me at a cheaper or some discounted rate? कि सर मेरे को करीबन 1400-1500 रुपए का पड़ रहा है, मेरे को चाहिए कि 500-600 रुपए का मेरा सेक्स सीमेंट पड़ जाए। देन अल्टीमेटली एक जो कंपनी है अल्ट्रा, उससे उसका जो ओनर थे, ही इज सेटल्ड इन यूके। मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे उत्तराखंड में आपका जो है सीमेंट डिस्काउंट रेट पे है, क्या हमारी J&K में प्रोबेबिलिटी है? बोलते हैं हो सकती है, बट यदि आप जो बोलोगे 50 स्टोर मंगाने, देन इट वुड बी डिफिकल्ट एंड इट वुड नॉट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव। मेरा कंसर्न ये है कि मतलब हर चीज पे यू शुड थिंक माइन्यूटली। और जो मैं यहाँ मेल फीमेल की बात कर रहा हूँ, मीन्स इसका मतलब इट इज वन मोर इंडिकेशन कि पीपल दे आर यूजिंग द sex semen, they don't want males, they want females. Anyway, next please. So here you can see one more point for Leh, Ladakh or J&K purpose. If I will talk, this is a very good sign of the growth, species wise population growth rate. You see methone increased, no doubt, in positive mode growth, and sheep and goat. बकाया आप देखोगे कि इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, और म्यूल्स और डंकी और इनमें जाओगे, दे आर गोइंग इन द नेगेटिव. So still you have a lot of options. Next please. Livestock population in the major state. Just I put this slide for the people from the J&K actually.
to strike them. थोड़ा सा उनके दिमाग को हल्का सा वो करना है यार। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप मेजर स्टेट्स। यूपी स्टैंड ऑन द फर्स्ट, नो डाउट, यस यूपी बड़ा है, सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हम इस मैप में टॉप स्टेट में नहीं आए। हो सकता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है हमारे पास लाइव स्टॉक कम हो, तो हम लोग लाइव स्टॉक के फील्ड में क्यों मूव नहीं कर सकते? हम अपनी स्टेट को, जे&के को, लद्दाख को इस मैप के अंडर टॉप 10 स्टेट में क्यों नहीं लेके आ सकते? इट मींस ये मैप ये बता रहा है कि स्टिल वी हैव लॉट ऑफ स्कोप इन दिस फील्ड। नेक्स्ट प्लीज। कैटल पॉपुलेशन यहाँ भी आप देखिए, जे&के हमारा मिसिंग है। बोवाइन पॉपुलेशन मैंने यहाँ हाईलाइट किया, दैट इज अबाउट 32 lakhs। बट ये जो मैंने ग्राफ डाले हैं, इनका डालने का पर्पज ये ही है कि यदि आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स आगे निकलेंगे तो इन कमिंग फ्यूचर वी विल हैव और स्टेट ऑन अंडर दिस ग्राफ। दैट्स माय टारगेट। नेक्स्ट प्लीज। या sheep population, here I am happy to find this J&K, but if you compare again with some Telangana and Andhra, Karnataka, Rajasthan even, so we should target to cross other states in the sheep production also. And sheep population is highlighted here. Next please. I have to little go fast because long time maybe some problem. Yeah, so this is a goat population. Here again my J&K state and Ladakh is missing. This data is including Ladakh. Okay, frankly I'm telling, is including Ladakh. So ultimately in all the fields we have still scope. We can think on that aspect. They are just a striking point for you guys if you want to become a, next please, entrepreneurs. Poultry population you see, yes, इसके पहले प्रेजेंटेशन में डॉक्टर साहब ने फिरोजी ने बताया था, in Ladakh also there is good scope for backyard poultry. Yes, actually I tried to put that slide but I removed. यदि आप परसेंटेज ग्रोथ में आप देखोगे डेटाबेस, तो बैकयार्ड पोल्ट्री की ग्रोथ इंडिया में इट्स रियली एप्रिशिएबल। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इसकी जो है अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। जब आप वेदर चेंज की बात करते हो, आप हिली और टेरेन की बात करते हो, तो अडेप्टेबिलिटी जो होती है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंजिंग पॉइंट। आप न्यू ब्रीड इंपोर्ट कर दोगे बट उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना और उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखना, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज। एनीवे वी विल आल्सो टॉक ऑन दैट इशू। नेक्स्ट प्लीज। सॉरी। या सो मिल्क प्रोडक्शन का आप देखोगे, यहाँ पे कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर से, एक्सोटिक कैटल का इंक्रीज हुआ, इंडिजिनस का थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हुआ है क्योंकि क्रॉस ब्रीड की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। और यदि अब टोटल यदि मैं कंपेयर करूं, इफ आई विल कंपेयर कंप्लीटली ओनली 4-5 states, 5 states, if I will say UP, Rajasthan, AP and Gujarat, they are contributing more than 50% milk production in India. It means other states also have scope. Next please. So this is the milk production you can see, and per capita availability, it's a good sign. It's a good sign. You can see it's a graph going, in the plus. So we have the scope. And you see about J&K and Ladakh, if I will talk, this is the important point, and this is the plus point for the entrepreneurs of the Ladakh. You see, import of the milk and milk product, still we have about 40,000 metric tons. It's not small, and that value about 138 crore rupees. Means why we are importing? Why we are importing the chickens and meat and milk? We have still a lot of scope. Next please. Sorry. So this is simply a milk contribution by species by. Here is, you can see that the major production by the buffaloes. So buffaloes may be also another important, as entrepreneurs they can become only for the buffalo. And if I will talk about the J&K and Ladakh, most of nomads, they are rearing the buffaloes actually. So there some quality of milk maybe sometimes may be challenging due to some hygienic. Anyway, so next please. I am highlighting briefly. So annual growth rate, you can see now we are standing at a good way.
It's a good way because you know all this data. If you want to become a startup, next please. Percentage share. As I already told you, percentage share तो होगा ही ज्यादा यूपी का, जब यूपी की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है तो उसका शेयर भी ज्यादा होगा. बट हमको सोचना चाहिए J&K का भी शेयर इसमें आएगा. नेक्स्ट प्लीज. यस यार ब्रीफली अपन हाईलाइट करें, विल हाईलाइट जस्ट ब्रीफ अबाउट एग एंड पोल्ट्री because this is a good opportunity in the field of poultry. New entrepreneurs, they can move with a small farms and they can become a millionaire or billionaire in this in the poultry sector. So this has the largest poultry producers is one of the largest, I mean scope in the world, not only in India and even in in the J&K. हर जगह इसका स्कोप है और स्टिल इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ द पोल्ट्री. यू सी total egg production is not a small data, and that includes both from the commercial and backyard poultry. And the egg production, it's another good sign. Actually, the statistics I am again and again repeating. This is very important because all the data they are showing a good sign for you guys. You can become entrepreneurs. Yes, per capita availability of egg is 79 eggs per annum. That is the Indian data for the national level. If I will talk about the state level of J&K, egg availability hardly 40 eggs per annum and national data 79. हाँ वो बात अलग है कि हम इंपोर्ट करके हमने उसको इंक्रीज कर लिया, हमने 100 तक ले गए हैं, लेकिन जो हमारे लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी है J&K के अंदर इंक्लूडिंग लद्दाख, that is very small. So we can, and government of J&K and Ladakh is also focusing on the poultry sector to increase the productivity. And import of egg in J&K मैंने already mention किया हुआ है. Next please. Similarly, you can see the meat production. Meat production we are also leading, and growth of about 6%. And meat production only from the poultry, it's contributing about 50%. Only poultry. अदरवाइज हमारी मीट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं शीप, गोट, बफेलो, सारा कुछ जितना भी लाइव स्टॉक है उसकी बात करते हैं. तो पोल्ट्री का कितना सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है. पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन है इंक्रीज 7.8%. इट्स अ बिग डेटा. मीट प्रोडक्शन अगर आप J&K में टोटल मीट की बात करोगे, दैट्स अबाउट 92,000 मेट्रिक टन एंड इंपोर्ट स्टिल वी आर इंपोर्टिंग. तो आप सोच सकते हो कि आपका स्कोप पोल्ट्री, मीट, शीप, गोट, अब इतना स्कोप है कि आपको किसी बिजनेस की जरूरत ही नहीं है. फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट प्लीज. Yeah, this is just database you see in the bull. We are not going in the downtrend. We are continuing in the uptrend. Next please. This is just a species wise contribution of the meat. मैंने आपको बताया that's contributing more than 50%. Next please. Yes, I think if you want to become entrepreneurs, if you want to have some startups, you should also know about some import and export of livestock and livestock products. यहाँ पे आप देखोगे कि लाइव स्टॉक का जो आपका इंपोर्ट है ना, स्टिल वी हैव अबाउट 10.73%. एक्सपोर्ट हमारा नेगेटिव में गया है. मीन्स ये जो स्टेट है, यहाँ पे आप देखोगे जो स्टेट लगी हुई है डेटाबेस, आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि हमारा स्कोप कितना है. हम इसमें जाके फेल होंगे या पास होंगे, ये आपने डिसाइड करना है. So this is just for your knowledge. I think I should not because it may take long time. Next, please. So fish production में जैसे मैं आप करूँ, fish production, fishery sector is really a significantly very important for the socio-economic upliftment of our society, and it become a source of livelihood. And आप यहाँ भी डेटा देख रहे हो, about 2.8 करोड़ number of fishers. उनके लिए जो लाइवलीहुड का काम कर रही है आज की डेट में फिशरी. एंड फिश प्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि सिग्निफिकेंट मतलब जो हाईएस्ट प्रोडक्शन पे गया है अभी, अगर आप कंपैरेटिव करोगे तो डेट वाज अबाउट 0.75 मिलियन मेट्रिक टन in 1950 और 51. अभी आप देखिए डेटा दैट्स मोर देन 40.
कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है. इट मीन्स गवर्नमेंट इज आल्सो फोकसिंग एंड इट हैज लॉट ऑफ स्कोप. फिशरी सेक्टर के अंदर जो उसका कंट्रीब्यूशन है आप देखिए, अबाउट 46,663 करोड़ रुपीस only through export, only by the fishery. You can see the data, very impressive data. And you can see here जो मैंने आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है डिटेल, कोई भी नेगेटिव डेटा नहीं है. It's continuous trend in positive direction. So it have another opportunity for you guys. Next please. Next please. Yeah. So वो मैंने आपको जो बताया, that is the really entrepreneurship opportunity in livestock, poultry, fishery farming. यहाँ पे ज्यादा आपको क्या बताऊंगा, सिंपली बता रहा हूँ आपके अपने पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम्स, लाइव स्टॉक ही एक ऐसा सोर्स रहा है जो हमारे लाइवलीहुड और हमारे जिंदा रहने का एक सोर्स रहा है ना. लोगों ने एक एक दो दो जानवर रखे हैं और एक एक दो दो जानवर से उन्होंने अपना परिवार चलाया है. तो वी कांट इग्नोर दिस फील्ड, है ना. एंड एट प्रेजेंट लाइवस्टॉक फार्मिंग अनडाउटली मनी मेकिंग बिजनेस. It's not only farming. Now we should talk about dairy business. We should talk about livestock business, not a livestock farming. We have to change our mindset. हम फार्मिंग की बात नहीं कर रहे, हमको बात करनी है अब बिजनेस की. Then we can think for more and more entrepreneurs. You see dairy farming really great way. मतलब इससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है. You are getting a good well nutritious diet because as we know the milk is the best way. Opportunity to establish feed factories, value added industry. मैं आपको ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बता दूं. रिसेंटली आई विजिटेड दिस हरियाणा. कोई कंपनी का कोई लेक्चर था कहीं पे किसी डेयरी या किसी में. लौट के टाइम पे जो प्रैक्टिकल फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोटिवेशनल है. मैं लौट के आ रहा तो एक डेयरी पे मेरे को हर्ट कराया किसी प्राइवेट कंपनी वाले ने. बोले डॉक्टर साहब थोड़ा सा डेयरी पे देखना है, इनके मेस्टाइटिस की बड़ी प्रॉब्लम है. एंड उसके पास अबाउट 1500 कैटल थे. मुझे कहता है कि सर मैंने आई जस्ट स्टार्टेड विद द 10 एनिमल्स हार्डली 5 years बिफोर. मैंने देखा, आई वाज सरप्राइज. ही हैड अ वेरी गुड फार्म. उसके अंदर पूरा उसका शॉप जो है मेडिसिन का कंप्लीट, जिसको आप बोलोगे कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी जो उसके पास नहीं थी. जस्ट आफ्टर द रोड क्रॉस करके आप देखोगे, एंड ही स्टार्टेड द फीड फैक्ट्री. क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा था कि सर मेरा सबसे बड़ा कॉस्ट तो फीड में जा रहा है ना भाई, आई शुड स्टार्ट. मैंने अपने लिए स्टार्ट किया एंड देन नाउ आई एम सेलिंग दैट फीड आल्सो. आपने नाम सुना होगा एविस डेयरी का, राजनांदगांव. पहले पोल्ट्री के हिसाब से स्टार्ट हुई थी वो. आज की डेट में कितना बड़ा ग्रुप बना है, क्योंकि आप एक चीज से स्टार्ट करते हो. और मेरे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जम्मू में, दे आर डूइंग ऑन दैट डायरेक्शन. बिल्कुल ब्रॉडली चल रहा है. नेक्स्ट प्लीज. या सेम इन द गोट. इट्स रियली, गोट को और सीप को तो जो बोला जाता है कि किसानों का क्या होता है, ये एटीएम मशीन होती है. इट्स रियली मोस्ट प्रॉफिटेबल ल्यूक्रेटिव बिजनेस लाइवस्टॉक फार्मिंग. फिगरी यदि मैं आपको हाईलाइट करूं, हम लोग उधर जाते नहीं है, पता नहीं क्यों. अदरवाइज इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, वेरी प्रॉफिटेबल, बिकॉज इसकी जो प्रोलिफिकेसी होती है दैट्स वेरी हाई. आप मैंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 10 to 15 पिगलेट्स पर बर्थ. और इसका डिमांड सबसे ज्यादा पोर्क का डिमांड है वर्ल्ड के अंदर. और इट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ द sorry protein. Next please. I think I should go fast. No, yeah. So poultry and quail farming. Quail farming में भी मैंने अभी जम्मू में देखा, लोग लेके आते हैं रोड के किनारे, खोल दिया, 5 मिनट के अंदर उनकी जितनी क्वेल होती है सारी सेल हो जाती है. क्योंकि ये प्रॉफिटेबल इसलिए, इसका एक तो शॉर्ट जनरेशन इंटरवल होता है. प्रोलिफिकेसी इन एग प्रोडक्शन इज नो डाउट. मैच्योरिटी, सेक्स मैच्योरिटी बहुत जल्दी आती है. तो देयर आर सम फैक्टर्स दैट क्वेल फार्मिंग यू कैन आल्सो अडॉप्ट इन ए प्रॉफिटेबल वे. नेक्स्ट प्लीज. मैं बताऊंगा सब गवर्नमेंट की स्कीम. गवर्नमेंट का जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन पुटअप किया, उसके आंसर दे रहा हूं. आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑफ माय क्वेश्चंस इन द फर्स्ट स्लाइड. Government has launched many schemes. If I will talk about a fish farming, you can see it is the biggest scheme, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.
जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अबाउट 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अलग अलग सेक्टर रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि फार्मर्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज के लिए अबाउट 12,000 रखा हुआ है, 7,000 से ज्यादा रखा हुआ है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सो इट मीन्स एज ए होल, इफ यू वांट टू बिकम ए entrepreneur in the fish farming, you can get the benefit from the government. Next please. Sorry. And dairy farming, इसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लेके आई है। रिसेंटली आई हैव प्रिपेयर्ड अ बुकलेट, और उस बुकलेट को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है। उसमें पूरी स्कीम्स को, चाहे पोल्ट्री की हो चाहे गोट्री की हो, पूरा डिटेल में मैंने दिया हुआ है कि किस पे डेयरी में किस बारी में कितना प्रॉफिट, सॉरी कितना सब्सिडी गवर्नमेंट आपको दे रही है। सो नेक्स्ट प्लीज। आप यहाँ पे देखोगे सारी स्कीम केवल ओनली फॉर डेयरी। एंड अनदर डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, जब हम लद्दाख की बात करते हैं, जब पहाड़ी एरिया की बात करते हैं ना, मैंने इसके पहले भी बात की थी, वहाँ CSIR की एक लैब है लद्दाख में, डॉक्टर साहब है एक वेटनेरियन है वहाँ, मेरी उससे बात हुई थी काफी डिटेल में, क्योंकि आई वाज प्लानिंग टू इंटरवीन ऑन सम बिग पॉइंट। तो मैंने उसके पहले वो बिग पॉइंट के लिए सर्वे किया था कि एक्चुअल क्या क्या है जिसको हम हिट कर सकते हैं और जिसकी जरूरत है। तो मैंने पहले भी बताया, इसके पहले डॉक्टर साहब ने, फिरोजी ने भी बताया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास प्रॉपर प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हम इतना कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट नाउ टारगेटिंग टू प्रोवाइड सम स्टोरेज फैसिलिटीज so that you can store the milk and then at one time you can transport it nearby your processing unit. Even government is ready to provide for the processing unit. तो आप ऑब्जेक्टिव ओवरऑल देखोगे, मॉडर्नाइज द मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड मशीनरीज एंड टू क्रिएट एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर to process the more milk. J&K only प्राइवेट सेक्टर जो भी बोलोगे, हार्डली लेस देन 3% प्रोसेसिंग हो रही है मिल्क की, मिल्क वैल्यू एडिशन जिसको आप बोलोगे, स्टिल हैव लॉट ऑफ स्कोप। इसमें जो है सेटअप के लिए गवर्नमेंट दे हैव गिवन अबाउट मोर देन 10,000 करोड़ बजट केवल इसी स्कीम के लिए रखा गया है, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी सारी क्रिएट कर सकते हो, and they are providing subsidized loan at 6.5%. Next please. Simply infrastructure development fund, इसमें अलग से गवर्नमेंट एक 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपीस, जिसके अंदर आप देखोगे गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग प्राइवेट कंपनीज, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, MSME, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। FPO पे तो गवर्नमेंट का इतना फोकस है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। And FPO is a really a key of success in any field for the entrepreneurs. क्योंकि आप 10 लोग फुल मिल्क की जो कॉस्ट ले सकते हो, इंडिविजुअल एक बंदा उसकी शायद कॉस्ट नहीं ले सकता। एनी फील्ड, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली डेयरी और पोल्ट्री, आई एम टॉकिंग इवन अबाउट एग्रीकल्चर। इफ यू हैव FPO यू मे गेट मोर मनी। इसमें क्या है, गवर्नमेंट का रहा है कि डेयरी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा है, मीट प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनिमल फीड प्लांट। सो एनिमल फीड प्लांट की एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूंगा। आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ग्रेट scientist. Maybe after my presentation, Dr. Ankur, he will be deliver more, I think, because that is his expertise, animal nutrition. Next please. So another government also has KCC scheme that all details has given here. There is some subvention of interest on 3%. Next please. So another integrated development of small ruminant and rabbit. इसके अंदर क्या कर रही है गवर्नमेंट, आई थिंक यदि यहाँ पे कोई फार्मर होंगे तो उनको पता होगा, छोटी छोटी यूनिट बांट रही है गवर्नमेंट, 10, 15 या 10, 20 ऐसे करके यूनिट दे रही है। That is unit government is providing free of cost with some other terms and condition कि आपके पास इतने टाइम के पास आपने इतने एनिमल मेरे को वापस करने हैं, that they will distribute to other farmers। क्योंकि ये स्कीम का एक पर्पज सबसे बड़ा ये हो रहा है कि फर्स्ट टू इंटरेक्ट टू द फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उनको इंटरेक्ट करना है। दे शुड रियलाइज विद ए स्मॉल यूनिट कि रियली इससे प्रॉफिट है कितना।
Once you will enjoy that profit for your family, ultimately, finally, you will become a big businessman. We should have hope. So I think I'm getting some message. Next, please. Poultry in this field also, the government has provided some funds, and with all the subsidy with 25 to 33.3%. Next, please. Yes. So here briefly, I will not go in details also, just for a motivation. About 20, more than even 20 सक्सेस स्टोरीज आई एम नर्चर्ड. मतलब मैंने 20 से ज्यादा डेयरी के सेक्टर में जम्मू में सक्सेस स्टोरी डेवलप की है, जिनको मैंने ग्राउंड से स्टार्ट किया है, कुछ को गिरते हुए बचाया है, जिनकी डेयरी 30 जानवर की 20 जानवरों की थी, दे आर गोइंग टू शट डाउन. आई रिवाइव्ड देम only by the simply technical interventions. I didn't give any money. Frankly, I am telling nowadays entrepreneurs, they need just a knowledge. They want a knowledge, basic technical knowledge. तो मैं सिंपली उनको ट्रेनिंग के माध्यम से या पर्सनल मेरी विजिट होती है, गांव में जाता हूं, उनके यहाँ पे पहले चेक करते हैं हम लोग की प्रॉब्लम जा कहाँ रही है, उसका ऑलरेडी सेटअप है, यदि वो कहीं हल्का सा डिसअपॉइंट हो रहा है, उसको रिवाइव कैसे करना है. कुछ ऐसे डेयरी वाले थे कि जिनने शेड तो बना लिया, बट अल्टीमेटली वो घबरा रहे हैं कि सर मैं कितने जानवर लेके आऊं, 2 लाऊं कि 4 लाऊं कि 10 लाऊं. तो ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों ने इंटरवीन किया है. नेक्स्ट प्लीज. और उसमें कुछ मैं बताऊंगा, 2-4 की स्टोरी डालिए. आप देखोगे मेरा विजिट डोर टू डोर होता है. इसके पहले मेरी डोर टू डोर पूरे जो मैं अपने अडॉप्ट किए थे कुछ विलेज, पहले वहां पे भी मैं गया, और रियली वहां जाके पता पड़ता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या. आल्दो मैं क्लिनिशियन हूँ, मेरे को पता है कि हेल्थ से रिलेटेड इशू क्या है क्या नहीं है, लेकिन माइंडसेट पता पड़ता है लोगों का काफी इन्हीं के बीच में. जैसे फर्स्ट पिक्चर आप देखोगे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ऐसे जब लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, तो उसमें काफी यंगस्टर्स आते हैं साथ में, वो बताते हैं, उनका व्यू पता पड़ता है कि यार वास्तव में इसकी इंटरेस्ट है क्या. फिर मैं उनको क्या करता हूँ, अपने ग्रुप में जोड़ता हूँ. मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वहां पे मैंने फ्री ट्रीटमेंट, जो भी किसी फार्मर को प्रॉब्लम जा रही है, एनीवन दे कैन जस्ट ड्रॉप योर मैसेज, आई विल सजेस्ट ऑन देयर पर्सनल नंबर. या तो मैं फोन करूंगा या उनको व्हाट्सएप करूंगा. आप यहाँ पे देखोगे हमारी जो ट्रेनिंग है लाइव स्टॉक के प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, उस पर भी ट्रेनिंग थी. उसी का परिणाम ये हुआ, कुछ हमारे डेयरी वाले आप देख रहे होंगे नीचे पनीर, क्योंकि उनको प्रॉफिट उससे ज्यादा है, वैल्यू एडिशन से हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होती है. आप यहाँ पे देखोगे एक जो डेयरी फार्मर, दैट इज आल्सो वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी. उस दिन हमारे माननीय मंत्री जी जो इंटरेक्ट किए थे, इन्हीं के डेयरी फार्म से इंटरेक्ट किए थे पहले ऑनलाइन. ये रिटायर्ड फौजी है, और आल्दो ये चाहते तो इनको तो पेंशन बहुत मिल रही थी, लेकिन ही वाज वेरी मोटिवेटेड. एक दिन मेरे पास आया कि सर मैंने कुछ करना है, पैसा मिला है, तो मैंने क्या कर सकते हो. बोले सर करना है एग्रीकल्चर और वेटनरी में ही है. तो मैंने कि एग्रीकल्चर में आपके पास लैंड कितनी है, बोले इतनी है. तो मैंने इसमें आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, बेटर यू शुड मूव टू द डेयरी सेक्टर. आप इससे ग्रीन फॉडर ले सकते हो, और एक शेड बना के आप, इसने मात्र 1 जानवर से या 2 जानवर लेके आए थे, मेरे को याद है, पंजाब से, और दोनों में से एक गाय बीमार हो गई, आती उसको मेस्टाइटिस हो गई. ही गॉट वेरी मच डिसअपॉइंटेड. मैंने की चिंता नहीं करो. तो आज की डेट में आप देख पा रहे होगे पीछे कितना सुंदर फार्म लग रहा है, और आई होप विद इन 1 ईयर इट मे बी डबल. नेक्स्ट प्लीज. इनसे मिलिए, ये दिनकर कौशल, बहुत अच्छे इंटरप्रेन्योर बने हैं. मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, इनके पास जॉब था जो शायद किसी ट्रैक्टर कंपनी में थे, और आप मानोगे नहीं, मैं बोलता था लोगों से कि देखो दिनकर जी ना 50-60 हजार रुपए की नौकरी छोड़ के डेयरी चालू की है. आई वाज सरप्राइज जब मैं उनकी डेयरी पे गया. बोलता सर सॉरी, आप माइंड नहीं करना. मैंने क्यों, क्या हुआ. सर आई क्विट माय जॉब, दैट टाइम आई वाज गेटिंग मोर देन 1 लाख रुपीस, एंड ही स्माइल्ड. मैंने कोई बात नहीं यार, मैं तो सोचता था कि आप 50-60,000 की नौकरी करते थे. एंड ही द वन, घर में केवल अकेले हैं, फादर इनके रिटायर्ड है, एंड ही हैज स्टार्टेड ओनली प्योर साहिवाल, वेरी मोटिवेशनल. आप इमेजिन नहीं करोगे इन बिटवीन. नेक्स्ट प्लीज, आप आगे बढ़ाते चले. आप इमेजिन नहीं करोगे, बीच में जो घाटे में जा रहे थे, मैंने बोला आप ऐसा करो यार, थोड़ा सा ना एक क्रॉसबेड गाय ले लो, एंड ही रिफ्यूज्ड. आई विल नॉट परचेज एनी क्रॉसबेड काउ because I want a clear-cut Sahiwal farm, and I want to sell my milk only by the name of Sahiwal,
and his milk is selling only through online, and he is selling the milk by the bottling. It's not a big businessman. आप लोग जो सोचिए बहुत छोटा फार्मर है लेकिन बॉटलिंग कर रहा है. हार्डली इनका जो है 80 to 90, जिसको आप बोलोगे, मतलब क्या बोलो, मतलब इतना छोटा फार्मर है, बट इसका मोटिवेशन देखोगे आप मान के चलोगे कि आप कितने लोगों को मोटिवेट करेगा. एंड ही डूइंग हिमसेल्फ एवरीथिंग. लेबर छोड़ के जाती है तो गोबर भी हटाता है. नेक्स्ट प्लीज. उसका परिणाम ये हुआ, उसने हमारे माननीय मंत्री जी एक टेक्निक करके चालू किया है. उसमें हमारे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया गया था. उसमें हमारे प्रोजेक्ट में जो है इंटरेक्ट हुए थे. आप नीचे पिक्चर देखोगे फौजी के फार्म की हमारे की. नेक्स्ट प्लीज. एंड परिणाम ये हुआ कि मंत्री जी बोले कि नेक्स्ट डे मैं जम्मू आ रहा हूँ एंड आई वांट टू विजिट एट योर दिनकर जी, मैं आपके फार्म पे जरूर आऊंगा. एंड ही वाज शॉक्ड कि सर मैं कैसे मैनेज करूंगा. एंड यू कांट इमेजिन, माननीय मंत्री जी आए और उन्होंने पूरा अच्छे से फार्म को देखा और इतना अप्रिशिएट किया. एंड देन नेक्स्ट प्लीज. उसका रिजल्ट ये हुआ. हाँ नेक्स्ट प्लीज. ये सारा कुछ करता है एआई, एवरीथिंग इज डूइंग एआई. उनने अपना कैमरा बेस एआई सेंटर वो रखा हुआ है सारा कुछ. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है मात्र. और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारा नेशनल साइंस उस पर भी आया. ये अनदर सक्सेस स्टोरी है. हुकूमत राज्य है, ये भी रिटायर्ड टीचर थे. एक्सीलेंट इनका जो बोला जाए. एंड नाउ ही ओपन द शॉप. पहले घर से नीचे अंदर से लेके जाते थे लोग, इनने आउटलेट ओपन किया. अब मानोगे नहीं, लाइन लगती है. नेक्स्ट प्लीज. या जैसे अनदर किशोर कुमार, ये भी सरपंच थे. आप इनको देखोगे, पहले इनके पास जो है इस टाइप का डेयरी सेट था. ये देखो आप, बड़ी प्रॉब्लम आती थी. एनिमल्स जो इतनी प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी. बस जस्ट टेक्निकल नॉलेज से आज ये हालत हुई. ही कंस्ट्रक्टेड न्यू शेड, यू कैन सी नाउ, एंड इट्स मोर नाउ हैप्पी. नेक्स्ट प्लीज. yes, whatever I have talked, this is the conclusion. Whatever I am doing in my lab, I put my logo of the laboratory of stem cells. My stem cells can't do anything if my technology will not deliver at the field level. Yes, very important. All the techniques, all the technology, and at all the stages are impossible to deliver at the field level. सारी टेक्नोलॉजी हर स्टेज पे डिलीवर नहीं की जा सकती है until unless आप उस टेक्नोलॉजी को एंड तक डेवलप ना करेंगे, तब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे. तो उसको डेवलप करने के लिए, डिलीवर करने के लिए आपको लैब में भी काम करना है, आपको मॉलिक्यूलर काम भी करना है, आपको मैक्रो भी करना है. जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो फार्मर सफर कर रहा है, उसके लिए आप फार्मर्स तक रीच करिए जैसे करना है. और मैं बता रहा हूँ, ये छोटे पॉइंट होते हैं लेकिन ये बहुत सही जगह हिट करते हैं, जो हमारी कंट्री को आज की डेट में जरूरत है. नेक्स्ट प्लीज. Yes, we can't become a successful entrepreneur without considering challenges. मैंने आपको बोला risk factor and their effective and timely management. आपने ये चीजें कंसिडर नहीं की, then you can't become a successful entrepreneur. आपको उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर जैसे मैनेजमेंट सारा कुछ देखना है. नेक्स्ट प्लीज. ये डेयरी सेक्टर की मैं बात करूंगा तो ज्यादा नहीं हाईलाइट करूंगा, थोड़ा थोड़ा चैलेंज आपको हाईलाइट करूंगा. सबसे बड़ा मेजर जो चैलेंज आता है, हेल्थ इश्यूज. छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें मिनरल डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से और सेकेंडरी प्रॉब्लम आती है. रिपीट ब्रीडिंग वगैरह का इशू बनता है, एनिस्टस का बनता है. आई थिंक गो फास्ट. एंड मेन पॉइंट आपको हाईलाइट करूंगा सबसे ज्यादा, एक तो इमर्जिंग और न्यू इमर्जिंग, री इमर्जिंग जो डिजीज आ रही हैं उन पर फोकस करने की जरूरत है. हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है. वी नीड अ लिंकेज बिटवीन डेयरी फार्मर्स एंड एकेडमी एंड रिसर्चर्स. नेक्स्ट प्लीज. नॉट एंड वेरी स्लो. मीन सबसे बड़ा जो हो गया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी साइंटिस्ट को भी नीड टू बिकम वेरी फास्ट. उसके लिए बहुत जरूरत है. शॉर्टेज जो हमारी है, वो शॉर्टेज को हमको देख के चलना है कि हमारे एरिया में फॉर्डर क्या है. बकाया टेक्निकल नॉलेज जो लिखा हुआ है, यू शुड ट्रेन विद द एआई और सम अदर, यू शुड बी अवेयर. नेक्स्ट प्लीज. मैं सोच रहा हूँ फास्ट करूँ. नेक्स्ट. नेक्स्ट. या सो देयर आर सम इकोनॉमिक लॉसेस, आई विल नॉट गो इन डिटेल्स. जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिजीज है उनको आपने टारगेट करना है. दैट इज माय कंसर्न. जैसे मेस्टाइटिस वन ऑफ देम, हाईली आई मीन जिसको मैं बोलूंगा वेरी, डेयरी के अंदर यार आपने मेस्टाइटिस मैनेज कर ली तो आप कभी घाटे में नहीं जाओगे. नेक्स्ट प्लीज.
जैसे मिल्क फीवर और जो प्रोडक्शन डिजीज जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट आफ्टर कार्विंग, you should know how to manage. If you will fail to know, you may suffer with the huge loss. बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. नेक्स्ट प्लीज. कीटोसिस, जैसे मिल्क फीवर बोला जिसको लोग कहते हैं ना कि वो एकदम से दूध निकाल दिया पूरा और गाय बैठ गई, जैसे कीटोसिस होती है. ये क्या करते हैं, ड्रास्टिक कीटोसिस जो डिजीज है दैट इज द एनर्जी डेफिशिएंट डिजीज. ये क्या करेगी, 20 लीटर दूध से हो सकता है कि 2 लीटर दूध पे आ जाए जानवर आपका. अब कैन यू इमेजिन कितना नुकसान होगा. यू शुड नो अबाउट दैट ऑल द इकोनॉमिक लॉसेस. नेक्स्ट प्लीज. So as I talked, mastitis, this is also one of the major problem in the field at the dairy farms. Next please. And this is the tick infestation. ये बड़ा कॉमन है, चिचड़ी पड़ गई, कीड़े पड़ गए, ऊपर वाले कीड़े बहुत हैं और उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं. उसका परिणाम जो होता है कि बहुत सारी डिजीज है वो प्रिवेल कर जाती हैं आपके, चाहे वो रिपीट ब्रीडिंग हो, क्योंकि टिक्स क्या करेंगे, ब्लड सक करेंगे, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट करेंगे अल्टीमेटली. वो कुछ डिजीजेज हैं जैसे ब्लड प्रोटोजन डिजीज, दे मे बी ट्रांसफर. सो यू शुड बी आल्सो केयरफुल अबाउट टिक इन्फेस्टेशन. नेक्स्ट प्लीज. Yes, so there are some effective management strategies. So ये यहाँ पे डिस्कस अपन नहीं करेंगे. If you want, you can take my number. If you want to become entrepreneurs, if you are facing problem of any specific disease, please you can contact me at any time. Next, please, and I will try to help you. I will try to help you 100%. This is the transition period. Briefly मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा. Transition period 3 weeks before to 3 weeks after calving. यदि आपने 6 वीक को अच्छे से मैनेज कर लिया डेयरी पे, आप बेस्ट प्रोडक्शन ले सकते हो. यदि आपने इसको पुअरली मैनेज किया तो आप नेक्स्ट लैक्टेशन में अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हो. दिस इज द ट्रू की पॉइंट. नेक्स्ट प्लीज. देयर आर सम मेजर डिजीजेज, जैसा कि अभी डिस्कशन हो रहा था कि बहुत एनिमल मरे थे. ऐसे कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकता अनटिल अनलेस उसने केस को देखा नहीं, डायग्नोज नहीं किया. बट डॉक्टर साहब ने रिप्लाई की थी कि लद्दाख में एचएस बहुत है, एचएस बहुत मोर्टिलिटी करता है. तो ये सम कॉमन प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट प्लीज. जिनका आप क्या कर सकते हो, वैक्सीनेशन बेस्ट वे है. एचएस हो गया, उसका ट्रीटमेंट करना इज डिफिकल्ट. नेक्स्ट प्लीज. So here I try to give some vaccination protocols. You can get the vaccination protocol from the internet also easily. आपने वैक्सीनेशन प्रॉपर कर लिया पोल्ट्री और डेयरी के अंदर, आप जो मान के चलिए आपकी डेयरी की बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाती, क्योंकि ये ऐसी डिजीज है एक बार आउटब्रेक हुआ, नेक्स्ट प्लीज, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान करके जाती है. सो दिस इज द वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर द पोल्ट्री. नेक्स्ट प्लीज. यू कैन गेट ऑन इंटरनेट. सो देयर सम इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर रिपीट ब्रीडिंग. कैसे मैनेज कर सकते हो, ये चीज अपन डिस्कस करेंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी. ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई कांट. नेक्स्ट प्लीज. या सो देयर इज सम कंक्लूजन. सारा कुछ मैंने बताया हुआ है. कंक्लूजन में वही है, स्कोप बहुत है डेयरी के सेक्टर में. ब्लाइंडली यू कैन कम, बट बिफोर एंटरिंग द इन एनी सेक्टर you should have some basic knowledge, you should have some trainings. Recently I am talking about. Next please. अभी रिसेंटली कोई राजौरी नहीं, उधर कश्मीर साइड से कोई फार्मर ही वाज गोइंग टू स्टार्ट डेयरी सेक्टर. आप मानोगे नहीं, वो यहाँ भी आया, जम्मू के फार्मर से मिला, इनसे डिस्कस किया, देन ही वेंट टू द पंजाब. पंजाब में जाके उसने इंटरेक्ट किया, एंड देन आफ्टर द कंप्लीट सर्वे ऑफ द 6 months ही स्टार्टेड द एंटरप्रेन्योरशिप. जैसे आज आईआईटी का जो लड़का बाहर निकलता है और वो एंटरप्रेन्योर बनता है, तो सबसे पहले वो सर्वे करता है मार्केट के अंदर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So here I think you can go through all the literature. Next please. Yes, they're timely. Thank you so much. I can't complete my presentation without acknowledging my whole team, all my funding agencies. I always thanks to all my team members. Next please. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity and for patience listening. Thank you. Thank you, Dr. Nilesh. Yeah, thank you, Dr. Sharma, for the really informative talk. Actually, we received a lot of comments in chat section about the informativeness of the talk. Yes, but indeed no question, because it was very much descriptive. It's
it left no doubt in anybody's mind. But yes, I request you to please send us that manual, the booklet which you have created in Hindi and English, where you listed all the schemes so that we can circulate among all the participants so that everybody can be benefited, sir. Sure. I'm also sharing my number. Yes, sir. Please drop your number in chat box so that anybody who wants to contact you can reach to you. But sir, don't forget to send that booklet so that we can send all the farmers and commoners. With that, I request Stenzen to please present brief summary of the talk. Thank you very much, Dr. Nilesh Sharma, for letting us know the points on why livestock is important for entrepreneurship and telling us about the status of livestock population, including cattle and sheep population in the major state of India, and also about the milk production and its per capita availability. Thank you so much, sir, for proudly letting us know how important agriculture sector is in the contribution to our Indian economy. We also learn about the contribution of livestock status in India, and we look forward that you will stay in touch with our STA Hub in future also. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Sharma. Now moving to next speaker, Dr. Ankur Rastogi. Dr. Ankur Rastogi is an animal nutritionist. He did his MSc in veterinary sciences and a PhD in animal nutrition from Indian Veterinary Research Institute, Izzat Nagar, Bareilly. So Dr. Rastogi has 15 years of teaching experience and research experience. Presently, he's working as associate professor at Faculty of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Sher-e-Kashmir University. So Dr. Rastogi is very much active in ruminant nutrition, feed technology, nutraceuticals, and novel feed stuffs. Dr. Rastogi has many patents under his name. He has more than 60 research papers and including 15 best paper awards in different conferences and including a best innovator award. So he guided many students, like 3 dozens of PhD and master's postgraduate students. He is also an associate fellow of Animal Nutrition Society of India and member of National Academy of Veterinary Sciences and life member of many other professional societies. And Doctor, before I hand over to Dr. Rastogi, let me tell our all participants that Dr. Rastogi was, was one among the those who we reached in 2019 for supporting our STI Hub when STI Hub was just in infancy in our mind. Then we reached Dr. Rastogi, sir, can you please help us? And Dr. Rastogi, very wholeheartedly called me up and said, Chandrasekhar, you go ahead and I'll be always there for you. So thank you very much, sir, for your wholehearted support to us throughout these 3 years, sir. And I believe that you will be helping us and STI Hub for the years to come, sir. So thank you very much, sir. And over to you, sir, for your presentation and your talk, sir. Thank you so much, Chandrasekhar. Thank you so much. And it's wonderful to be finally to get the things started with you. And thank you, IMTECH. Thank you, STI Hub, Ladakh. And yes, I am very excited. It's awesome to be connected to all of you. And I've been following the proceedings since yesterday, and it was good to hear some wonderful people there. And especially morning talk by Dr. Feroz, it was quite comprehensive, covering all the aspects. And in fact, he did such a wonderful job of covering the basics of animal nutrition that my job became quite easy, and I will be skipping a lot of introduction part in my talk. So without wasting any more time, let me get straight to my presentation. Let me share my... It is asking for screen presentation. Wait a minute. There is a shared tray, it is saying, but it is not opening. Can you help me with that?
Again, the same thing. It's the open share tray or something like that. Excuse me. Is my screen visible? Sir, if you're having some problem, please send me your PPT, so I'll be sharing from my end. That will be fine. I'm putting my email in chat box, sir. It's available now. Okay. Just a minute. Yes, because MS Teams is quite new to many people. Yeah. Actually, it is saying some. I've opened the share tray, but it is not. Nothing else is happening here. So just a minute. I'm sending it to you. And I request all the speakers expert to stay patient. I know we are running late, but we need your support. In that I can help you out. I will be quick in finishing the things there. Yeah. So, take much actually, time. Yeah. Yeah. Meanwhile, you're sharing your presentation with me. Let me talk to the people. We have, arranged our session in a manner that first we will hear from the R&D experts from research institutions or the academia, and then in the later half of every session, we'll be hearing from the people who actually develop technology and working on field. They are from they are running their startups or MSMEs or companies, and they could be unicorns in coming future. So we invited people from industry also to augment every complement every session with technology demonstration. So yes, I got your presentations. Give me just 1 minute, sir. I'll be yes. So can you stop? Oh, now it was visible, sir. It was visible. Okay. Yes. Just a moment. Yes. Yeah, it's visible. Yes. Okay. Okay, that's good. That's great. So okay, let me start. So, okay, the topic given to me is that field deployable nutritional interventions to augment livestock productivity in resource limited hilly terrain. And we are very well versed with what we mean by resource limited terrain in context of Ladakh. And when I talk about the field deployability of the techniques, we all know that those who are working in the R&D places, they are basically developing lots of technologies, but only very few of them percolate down to the field, and especially to the places where they are required the most, like Ladakh. And why that happens, or what's the problem with it, I will be discussing few of those things. And believe me, when I will be talking about the field deployability of some of the techniques, then these are the techniques which are some of the most simplest one, some of the most easy one to apply, and you don't need technical expertise to practice them at the field level. Let me start presentation with a very let me say controversial sort of a statement, and that is dairy farming is not a business of milk. Most of us, and when I say dairy farming is not a business of milk, it can very well, we can also say that goatry is not a business of meat, or sheep farming is not a business of wool. Why so? Now, we all know this is basically a product, and this is what the primary objective of keeping these animals.
like cattle and buffalo, for milk production, or getting some money out of it. All those who are in the business of dairy, if, and I am assuming some of the audience is from that background, or they want to enter that, and as Dr. Nilesh covered that, if that lecture, I hope that some of you may get excited to join this field or join this business. Basically, milk production, if you consider that as the main product of dairy, then you are hindering your progress by a significant margin. All the successful farmers, those who approach dairy farming as dairy business, they don't focus on the milk production or the quantum of milk. The milk will come, milk will be there as a product, and that will be able to take care of your day-to-day expenses. But what you should focus on is something totally different. You know, if we talk about the cycle of production in case of dairy animal, so a female calf should be ready to breed by age of 2 to 3 years, somewhere depending on the breeds, depending on the environment, and depending on the food. So after that, that heifer should be at the breedable age. If the mating happens, then 9 months of pregnancy, and then calf, and then 3 months again to get be ready for mating again. So that means 9 plus 3, that makes 1 year. And that, if you go through any standard book, if you talk to any expert of animal husbandry, they will say that your animal should be good enough to produce 1 calf a year. And same thing, अगर आप दूसरे breeds के हिसाब से, दूसरे species के हिसाब से, उनके pregnancy के time and ready for breedability के हिसाब से अगर calculate करें, तो that optimum duration between 2 calving, that's the most important thing. Why so? Because dairy farming is not a business of milk. It is a business of creating your replacement stock. एक फीमेल एनिमल से अगर हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो 50% ऑफ द एनिमल जो उसकी प्रोजनी होगी, जो उसके काफ्स होंगे, उनमें से 50% फीमेल होंगे. And what you will be doing is creating, if in 6 years you are getting 6 calves and out of them 3 are female, then you are getting 3 animals out of that 1 animal. And if you are purchasing a simple female calf and making it ready for breeding in 2 years, 2.5 years, let's say, and at 6 years to that, that is 8.5 years. तो आपका एक एनिमल 8.5 ईयर में, ये एनिमल तो 8.5 ईयर में ठीक है, इसकी अपनी रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाएगी, लेकिन 3 एनिमल तैयार करके देगा. कैन यू टेल मी एनी बिजनेस, कैन यू टेल मी एनी other production area where your money become 3 times in a span of 8 years? Not even the best of business can compete with that. But for that purpose, your objective should be calf a year. Remember, without any gap. ये बात हुई सिर्फ एनिमल की. And whatever you are getting as milk, whatever you are getting as dung, उससे बायोगैस बनाइए, आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए, फर्टिलाइजर बनाइए, जो भी कुछ एडिशनल है, that is over and above income that can take care of your day-to-day expenses. But what your target should be, getting the replacement stock. And to get that replacement stock, you need to have a strict calf a year formula. Calf a year formula, what it requires, your animal should have a healthy, animal should be ready for breeding after parturition in 3 months. What you require to maintain that duration, and there should not be repeat breeding, and there should not be any silent heat or things like that. What you require? You require good nutrition scenario, a good nutrition regime, both pre-parturition, post-parturition, and during the entire lactation cycle. And we will come to one by one, we will come to all the problems and we will address them, and I will give you some handy solutions to address those problems.
So that's what I mean by when I say dairy farming is not a business of milk. So if you are a dairy farmer, if you are an aspiring dairy farmer, if you are an aspiring entrepreneur, just change your approach to in this sense. To don't focus on milk. Milk will be a byproduct and it will come naturally. Why nutrition is so much important? Why no talk about livestock farming is complete without talking about the feed and fodder. And the thing is that it's the basic foundation of your livestock keeping. Almost everyone now knows that 65 to 70% of the expenditure that you do in livestock farming is on feeding. And anything that you are any input that you are giving towards the feeding, that is only coming out as the output and over addition to it. Without maintaining the proper nutrition or without maintaining the proper feeding regime, you cannot expect production, quality or quantity, and that includes the growth rate. And when you're talking about the meat animal, that is everything. And that milk fat percentage. You cannot have a proper reproduction cycle, as I just discussed. You will have reproductive failures, multiple. If your animal is not getting ready for breeding in 2.5 to 3 years, that you are losing 1 year and 1 year of milk production, one calf in the total reproductive age. Health, in health scenario, nutrition, health interaction, there is many things to say for that. But the most important one that I should mention, apart from the reproductive health, is vaccination failure. आपका खर्चा होगा वैक्सीन पर, आपकी लेबर लगेगी वैक्सीन पर, एंड प्लस वैक्सीनेशन एक फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट देता है कि now our animals are safe and they can handle the calamities, or they can handle what if the infection is going around. And sometimes we become well vaccinated animal, if a completely vaccinated animal, then we have seen the complacency on the part of the farmer कि अरे हमारा farm तो पूरी तरह से vaccinated है, अगर यहाँ थोड़ी बहुत गंदगी रहेगी भी तो चलेगा. तो न्यूट्रिशन हेल्थ इंटरेक्शन में एक ये बहुत बड़ा इशू आता है कि if the animals are underfed, if the animals are not well fed in terms of all the nutrition, then बाकी को infection आए तो ठीक है, but they become more susceptible to vaccination failure, and then they are more susceptible to catching an infection. So this is all a nexus. The production is one major part, nutrition is one major part of it, and any deficiency in terms of nutrient supply, nutrient intake, or nutrient utilization will hamper all these areas. And finally, feed is also directly or indirectly responsible for all the climate footprints of livestock keeping. We all know about, we have heard a lot about the methane, we have all heard a lot about the nitrogen outgo in the waste and how it is affecting our water bodies or how it is affecting the soil. And then we all know about the food safety aspect of it, because problem with the feed will result into residue in the product, and then if there are residues in the product, then finally we are the consumers and we are the one to suffer. And most of the smallholder farm जहाँ पर number of animals कम हैं, जैसे कि लद्दाख is one major example, जहाँ पर milk production या meat जो market की जगह कई बार सेल्फ कंजम्पशन के लिए रेयर किए जाते हैं एनिमल, तो ऐसी जगह पर फूड सेफ्टी एक मेजर मेंटल इशू बन जाता है, एक मेजर कंसर्न बन जाता है. एंड सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज एक मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके पूछता हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए, इवन इफ यू आर एन एनिमल लवर, अगर आपका एक एनिमल का 1 kg मिल्क प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर 40 रुपीज़ आएगी और मिल्क की सेल रेट 38 रुपीज़ भी होगी, आई थिंक कोई भी एनिमल नहीं रखेगा. So ultimately, sustainability of a farm depends on the what you are feeding and how that feed is turning out into product and what the economics of it. So that rules the feeding regime. With the resource availability,
as we are talking about the resource limited area, you know, it happens in reverse that if we are having more resources, then we go for the intensive type of animal keeping, and if we have less resources we go for extensive, and there is something in between, semi intensive. ये तीन चीजें डॉक्टर फिरोज ने सुबह मॉर्निंग में भी आपको कवर की हैं, but those who are not at all from the livestock background, let me give you a brief idea about it. Intensive is when we keep the animal mostly indoor or just in the paddock, and we are feeding them whatever they are eating, we are cutting and bringing it to them. It's our job to feed them. In this scenario, animals are much more prone to the nutrition imbalances because they depend on us, and any fault on our part will translate into, will affect their metabolism or their nutrition scenario. In extensive, this is type of the where they are dependent on grazing for their nutrition, और जो आपके nomadic type of husbandry है, Ladakh and Kashmir and Jammu region and Himachal region, where we are taking animals, we are migrating the animals to the pasture depending on their weather, and this is type of typical example of the extensive. Now, extensive type of animal husbandry is basically zero input type of animal husbandry. यहाँ पर फार्मर की तरफ से इनपुट जो होता है वो लेबर एंड टाइम का होता है, रिसोर्सेस का नहीं होता. बहुत कम चीजें हैं जो सप्लीमेंट की जाती हैं एनिमल को, और इसलिए आउटपुट in terms of money will be there, but because they don't figure the cost of the time and resource in their time and the human resource involved. But if we talk about the output of the meat or milk, in meat especially in terms of the per animal, then it is quite less, because a lot of energy is wasted in migrating these animals from one altitude to other. Semi-intensive is a mixed type of thing where animals are sometimes grazed and sometimes then brought in, and then inside the shed they are given supplements, and it's a mix of the both extensive and intensive. Now the thing is that when we talk about normally when we talk about the hilly areas and plains, then this, if we take this triangle as a symbol of the plains and in between and the hilly areas, then it is basically a reverse type of thing that mostly the extensive type of this animal husbandry is practiced in the hilly areas where they may have some grasslands available or the alpine pasture, and intensive is practiced in the plain or the semi-urban kind of situation. But with the Ladakh, we have a strange point. आप सभी जानते हो कि वहां पर जिस तरीके से almost 7 to 8 months of the year, that makes it 60% to 65% of the total time in the year, ऐसे समय एनिमल्स को बाहर रखना मुश्किल है. ऐसे समय एनिमल्स को की फीडिंग कट एंड कैरी सिस्टम में या इनसाइड द शेड ही करनी पड़ती है. तो हम हिल पे होते हुए भी, हम रिसोर्स लिमिटेड एरिया में होते हुए भी, हमें अपने एनिमल्स को अंदर रखना पड़ता है, और वहां पर वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फार्मर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको क्या खिलाया जाए. तो आपका रोल इसमें, तो ये टिपिकल सिचुएशन जो कि हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट रीजन की वजह से आती है, जो बाकी हिली एरियाज में उतनी नहीं देखने को मिलती है, वो लद्दाख के लिए बहुत स्पेसिफिक है. इसलिए जो बाकी जगह जो मॉड्यूल्स या जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं लाइव स्टॉक फीडिंग को लेके, वो लद्दाख में एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव समवॉट अ डिफरेंट थिंकिंग. मोस्ट ऑफ द commercially available solutions of livestock feeding are not applicable in your area. So you need a separate type of strategy to handle animal nutrition in Ladakh. So objectives of feeding plan, which I think, in my opinion, suitable for your area, I will be talking about some specific points. On these specific points, that is, one is zero wastage. I will elaborate one by one all these points, and emphasis on local resources and preservation. Now, let's talk about zero wastage a bit.
There are two types of wastage, that is internal wastage and external wastage of nutrients. This is the wastage of nutrients. So a feeding plan for an area like Ladakh, where resources are very, very limited, then we cannot waste even a single, I say, kg of organic matter or nutrients. We need somehow a plan where there should be no external wastage. When I talk about external wastage, I mean outside the animal, that is prior to feeding or during feeding. Internal wastage, which is the metabolic part of it. During the digestion and the metabolism, the nutrient wastage should be minimized. Let's talk about external wastage and how we can adjust these external wastage. You know, the most common way of feeding the animal when they are kept intensive in Ladakh is through the hay feeding, straw feeding, supplemented with some of the concentrate, some of the grains, right? So when we talk about the feeding of, I'm not going into the concentrate roughage and basics of that. Dr. Feroz covered it beautifully. So the problem, one of the major problem that has been conveyed to me is, as I've seen that the long hay is being fed to the animals in Ladakh. Straw is okay. Most of the straw available there is that of wheat straw and barley straw, and most of it is converted into a bhusa sort of thing. And that bhusa, the particle size of bhusa is very well suited for the animal consumption. But the problem with the long hay, grass hay that you are feeding, and the alfalfa hay that is being fed commonly in Ladakh, वहां पर इशू क्या आता है कि जब आप पार्टिकल साइज बड़ा रखते हो, जब आपके लॉन्ग हे होती है, उसको आपने कटिंग नहीं की हुई है, तो एनिमल च्यूइंग में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है. एंड यू नो, एक तो पहले से ही एनिमल एनर्जी डेफिशिट में है, उस समय हमारे पास फीडिंग के लिए नहीं, उसका बहुत सारी एनर्जी जा रही है हीट कंजर्व करने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं है. और ऐसे समय पे हम उसे लॉन्ग हे फीड कर रहे हैं, जिसको च्यूइंग में उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो मैस्टिकेशन में लगा रहा है एंड उसके बाद रूमिनेशन में लगा रहा है, वो एनर्जी यूज हो सकती है एनिमल के लिए, दैट मे गो टू द मीट प्रोडक्शन, इट मे गो टू द मिल्क प्रोडक्शन, एंड इन दैट वे इट विल बी यूजफुल फॉर द एनिमल प्रोडक्शन. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीनरी दैट यू कैन इंस्टॉल इन अ डेयरी फार्म और इन अ goat farm or in a sheep farm, it should be a chaff cutter. ये जो आप चैफिंग मशीन देख रहे हो, चैफ कटर, चाहे बैटरी ऑपरेटेड हो, चाहे पावर ऑपरेटेड हो, चाहे हैंड ऑपरेटेड हो, जो कि ये बहुत कॉमन है वहां पर, ये होनी मस्ट है. आपका कितना भी छोटा फार्म हो, 1 एनिमल, 2 एनिमल, 5 एनिमल, 10 एनिमल, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ चैफ कटर. चैफ कटर होने से जितनी एनर्जी आप देखो, जो अवेलेबल एनर्जी है, वी हैव टू फाइंड रिसोर्सेज आउट ऑफ दैट, हमें उसी में से खिलाना है, एडिशनली हम जनरेट नहीं कर सकते. आई एम नॉट अ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कि मैं आपको तरीके बताऊंगा कि क्रॉप ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, या वहां पर जो वाटर की कमी से वेराइटीज का साइज छोटा हो गया है तो अब उसमें हम कुछ कर सकते हैं कि एडिशनल स्ट्रॉ जनरेशन. नो, आई एम नॉट सेइंग टू इंपोर्ट स्ट्रॉ. व्हाट आई एम सेइंग, अवेलेबल स्ट्रॉ या अवेलेबल हे की का अगर आप चैफिंग कर देते हो, अवेलेबल ग्रीन्स की अगर आप चॉपिंग कर देते हो, and that chop size should not be very small, should not be very big, anything from 3 to 4 centimeter works. हमने इस पे भी थोड़ी रिसर्च की थी कि अगर हम 3 ब्लेड वाला चैफ कटर यूज करें या 2 ब्लेड वाला यूज करें या सिंगल ब्लेड यूज करें तो उससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं. एंड वी फाउंड दैट द मीडियम साइज ऑफ that 1 to 1.5 inch or 3 to 4 centimeter size is good enough for the animal, as it minimizes the energy lost in the mastication part. So this is one recommendation from my side, that one thing you can work on, or one thing that should be your first objective in an animal farm, is to have a chaff cutter. Depending on the size, you can have any type of chaff cutter, but keep these size, and no long hay, no long straw, and no long green to be given. It should always be chaffed or chopped.
Second point is roughage densification. Now, roughage densification is just preparing the bales or cubes or blocks of straw or hay. Now, what roughage densification does? One practical aspect is कि storage easy हो जाती है. दूसरा practical aspect है कि transport easy हो जाता है. लेकिन roughage densification का जो एक सबसे बड़ा aspect है, वो है कि ये आपको जो लॉट साइज आप एनिमल को देते हो और जब एनिमल उसमें बिट करता है तो जो 10% to 15% ऑफ द रफेज जो इधर उधर गिर जाता है वो नहीं गिरता. डेंसिफिकेशन रफेज को एक साथ रखता है. एंड आई डोंट नो कि वहां पर अभी क्या स्टेटस है, रफेज डेंसिफिकेशन मशीन्स इंस्टॉल्ड हुई हैं कि नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है जहां पर एक कमर्शियली अवेलेबल है, वहां पर ये है कि चेफिंग के बाद वो ग्राइंडिंग ऑफ स्ट्रॉ कर देते हैं. एंड ग्राइंडिंग ऑफ स्ट्रॉ से पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो जाता है. पार्टिकल साइज बहुत छोटा होने से उसकी पैसेज फ्रॉम द र्यूमन और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, द र्यूमन रेटिकुलम उनसे तरफ फास्ट हो जाती है. और जब कोई चीज फास्ट मूव करेगी तो उस पर एंजाइम कम एक्ट कर पाएंगे, कम देर एक्ट कर पाएंगे, कम देर एक्ट कर पाएंगे और कम एक्ट कर पाएंगे. तो अल्टीमेटली जितनी देर एंजाइम एक्ट करेंगे उतनी देर उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने में लगेगी. तो वो क्योंकि वो नहीं निकाल पाते हैं तो दैट्स द प्रॉब्लम. तो रफेज डेंसिफिकेशन में ग्राइंडिंग नहीं करनी है, हे और स्ट्रॉ की ग्राइंडिंग नहीं होनी चाहिए. इफ यू आर गेटिंग बेल्ड और ब्लॉक और डेंसिफाइड रफेज फ्रॉम एनीवेयर, इफ यू आर इनपुट, अगर आपको इंपोर्ट कर रहे हैं या वहीं पे बन रहा है, then always stress upon that there should not be any grinding prior to densification. चेफिंग हो and then by pressure. उसका मैं आपको एक practical example भी बताऊंगा. Concentrate densification, of course we all are very well versed with these pellets. Concentrate densification क्या काम करता है, बाकी सारी बातें ठीक है. सबसे पहले वही काम है जो रफेज डेंसिफिकेशन का है. रफेज डेंसिफिकेशन, what I was saying, apart from the ease of transport and storage, when animal bit into it, that 10 to 15% loss because of the कि वो इधर उधर गिर जाता है रफेज, that same thing happens with the concentrate also. Concentrate में इन कंट्रास्ट टू रफेज ग्राइंडिंग की हुई होती है और ग्राइंडिंग होने की वजह से कुछ पार्टिकल साइज, कुछ पाउडरी, स्पेशली ब्राउन एक्सेट्रा और पॉलिश, वो बहुत पाउडरी फॉर्म में पहुंच जाते हैं. देयर आर फाइन पार्टिकल्स अवेलेबल देयर. तो जब हम मैश को हैंडल करते हैं, जब हम मैश इज द पाउडरी फॉर्म और द ग्राउंड फीड, तो मिक्स्ड फीड. तो कॉन्सेंट्रेट में जब हम मैश फॉर्म में अगर हम कॉन्सेंट्रेट खिलाते हैं तो उसमें जब एनिमल उसको खाने के लिए आता है, तब बिकॉज ऑफ द मूवमेंट एंड बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन पार्ट के एनिमल उसमें से पहले जो उसकी फेवरेट चीजें होती हैं वो सिलेक्ट करता है, लाइक ग्रेन एंड इफ यू आर फीडिंग ऑयल केक पार्ट, तो ऑयल केक का हिस्सा, तो उस वजह से बाकी चीजें इधर उधर गिरने के चांस रहते हैं. Normally, commercial farmer at the plain where there are so many resources, they don't worry about this 5 to 10% wastage. But you should worry. Ladakh cannot handle that sort of wastage. इसको हैंडल करने के लिए कॉन्सेंट्रेट डेंसिफिकेशन का ये वाला जो तरीका होता है पैलेटेड फॉर्म में, ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इजी है. इससे कॉन्सेंट्रेट ऑफर करना बहुत इजी हो जाता है. एंड देयर इज वन मोर थिंग टू इट. When you do this sort of densification and you are offering animals densified roughage and densified concentrate, then lot size that is available for an animal is very precisely controlled, and that helps a lot in keeping your economics, farm economics in check. मैं इस पर थोड़ी और बात करूंगा, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ. ये हमारे यहाँ पर स्क्वाश जम्मू में हमारे डिवीजन ने ये कुछ वो डेवलप किए हुए हैं. यहाँ पर दीज आर दी 2 डेंसिफिकेशन हैंड हेल्ड मशीन. तो स्पेशली जहाँ रिमोट एरियाज, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि लगाने के लिए जगह नहीं है कुछ इंडोर, तो ये छोटी मशीन्स, अदरवाइज डेंसिफिकेशन मशीन्स में बहुत थोड़ा लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है. बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, पावर ऑपरेटेड होती हैं, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होती हैं. ये मशीन सिंपल है. This is a nutrient brick maker on the right side, and this is basically a machine जहाँ पर हम
जो आपने अगर मिनरल ब्लॉक्स की बात सुनी होगी, मोलेसिस मिनरल ब्लॉक की बात सुनी होगी, ये उसी का वेरिएशन है। वो इसमें सिंपली एक पर्सन खुद अपने पास ये मशीन लगा के इसको बना सकते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज रफली अराउंड 8 to 10,000 ओनली, जो इसकी मेकिंग चार्जेस हैं, इस मशीन के फैब्रिकेशन चार्जेस हैं। वेरी सिंपल डिजाइन टू मेक। ये मशीन हमारे ऑलरेडी कमर्शलाइज हो गई है, यहाँ से एक फर्म ने परचेज कर लिया है इसका डिजाइन। सो आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट। एक यहाँ पर ये फीड ब्लॉक मशीन है, सेम प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है। वी विल प्रेस फ्रॉम द टॉप, और ये फीड ब्लॉक मशीन कंप्लीट फीड के लिए बात की जाती है। कंप्लीट फीड से बोलती है इसमें रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट दोनों मिक्स कर दिए जाएं। हमने इनके जो ब्लॉक यहाँ पर बना रखे हैं वो फोर्टिफाइड ब्लॉक्स हैं। फोर्टिफाइड ब्लॉक्स का क्या यूज किया हुआ है हमने, किस तरीके से हम उस चीज को डेवलप कर रहे हैं, उसमें क्या उससे फायदा है, वो थोड़ी सी आगे मैं बात करूंगा लेटर इन माय प्रेजेंटेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सटर्नल वेस्टेज। एक्सटर्नल वेस्टेज में हमको क्या ध्यान रखना था कि बाहर जो गिर जा रहा है वो ना गिरे, चबाने में ज्यादा उसके साथ इशू ना हो, एनिमल सॉर्टिंग नहीं कर पाए। ये चीजें से हम एक्सटर्नल वेस्टेज थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करके इसको हैंडल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, अगर आप अपने पास आपके पास कॉन्सेंट्रेट फीड नहीं है, कॉन्सेंट्रेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, या आप उसको यूज नहीं करना चाहते, एंड द मेजर रीजन ऑफ नॉट डूइंग सो इज बिकॉज यू ओन अ एग्रीकल्चर फॉर्म ऑल्सो, और आपके पास अपनी कल्टीवेशन है, वीट की है, बार्ले की है, जो जैसा कि वहां पर होती हैं। इन दैट केस आपके पास अपने ग्रेन है, आपके पास अपना ऑयल केक है। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, you want to prepare your own feed and you don't want to buy a pellet making machine, that obvious। pellet making machine की क्या जरूरत है, तो आपके पास मैश फॉर्म में ही है फीड, और आप खिलाना चाहते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं लेकिन आप खिलाना चाहते हैं, तो देन यू विल से कि हाउ टू अवॉइड एक्सटर्नल वेस्टेज। A very ancient technique to do that, a very simple ancient technique to do that, popularly known as sani making in most of the North India। सानी मेकिंग में क्या होता है कि जो मेंजर है जहां पर एनिमल को आप खिला रहे हैं, उसमें आप रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट जो मैश है उसको थोड़े पानी के साथ मिक्स करके रख देते हैं, और कुछ देर के लिए उसको सोक होने देते हैं, एंड एनिमल कैन ईट इनटू दैट। तो वो आपका मैश वेस्टेज नहीं होती, रफेज की वेस्टेज नहीं होती, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट फीड। कंप्लीट फीड के क्या इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं अभी आगे बात करते हैं। सो लेट्स कम टू द इंटरनल वेस्टेज। इंटरनल वेस्टेज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, when we are talking about these animals which are the food animals, then we are talking about cattle, sheep, buffalo, या आपकी भी बात कर रहे हैं। ये सारे एनिमल्स जो हम रखते हैं एज अ फूड एनिमल, ये सभी रूमिनेंट्स हैं। रूमिनेंट्स की मेन खासियत होती है, मेन एटीट्यूड, द मेन उनकी क्वालिटी है दैट दे कैन कन्वर्ट, देयर ऑब्जेक्टिव इज दैट दे कैन कन्वर्ट inferior kind of feed stuffs which we cannot consume, like straw and hay, and convert it into something value added project which we can consume, like milk and meat, which are nutrient rich. And how this happens is because they have a stomach divided into 4 parts. In the first part, that is rumen, which is the major part of their digestive system, यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर फंजाई होती है, यहाँ पर प्रोटोजोआ होते हैं, जो इस फाइब्रस फीड स्टफ्स को तोड़ते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं इन देयर ओन बॉडी। एंड इन दिस प्रोसेस दे प्रोड्यूस वोलेटाइल फैटी एसिड, जो एनर्जी का सोर्स होते हैं, वो अपनी बॉडी बनाते हैं, जो कि प्रोटीन का सोर्स होती है, और ये प्रोटीन और ये एनर्जी फाइनली एनिमल को अवेलेबल होता है। तो ऑब्जेक्टिव इज कि आप जो भी कुछ खिला रहे हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फीडिंग अ लाइवस्टॉक इज कि उसके र्यूमन में रहने वाले जितने माइक्रोब्स हैं हम इनको खिलाएं। ये जब खा के जब इनका कुनबा बढ़ेगा, जब इनका नंबर बढ़ेगा, इनकी पॉपुलेशन ऑप्टिमम रहेगी, इनकी फंक्शनिंग ऑप्टिमम रहेगी, तो एनिमल को वोलेटाइल फैटी एसिड जो कि एनर्जी का सोर्स है, एंड द माइक्रोब्स जो कि प्रोटीन का सोर्स है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, ये सारे कुछ ऑप्टिमम क्वांटिटी मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर भी इम्बैलेंस होता है तो microbes are very sensitive, they won't be functioning to their optimum, and when they won't functioning to the optimum, you are not able to harness the productivity of the animal, you are not able to realize the genetic potential of the animal in terms of production or the reproduction। तो हमारा पहला टारगेट है कि सब कुछ इन हार्मोनी रहे और ये माइक्रोब्स
वेल टू डू या ऑप्टिमम लेवल पर फंक्शन करते रहें। और वो बहुत सिंपली अचीव हो सकता है राशन, जब राशन बैलेंस होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन, जब राशन बैलेंस होता है इन टर्म्स ऑफ थिंग्स विच आर सॉल्युबल इन ह्यूमन एंड थिंग्स विच आर इनसॉल्युबल इन ह्यूमन, राशन जब बैलेंस होता है इन टर्म्स ऑफ उनकी डिग्रेडेशन रेट जो है ह्यूमन में, वो सही सही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हो, कुछ जल्दी डिग्रेड होते हो, कुछ थोड़ी देर में, कुछ उससे भी बाद में। अगर ये राशन पूरा इन चीजों में, एनर्जी, प्रोटीन, डिग्रेडेशन रेट एंड सॉल्युबिलिटी इन ह्यूमन, इनमें अगर प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है तो सारी चीजें प्रॉपर्ली यूज होती हैं। वी विल हैंडल वन थिंग एट वंस, वी विल गो इन डिटेल ऑफ दैट, राशन बैलेंसिंग एंड टीएमआर। टोटल मिक्स राशन इज अगेन द सेम थिंग, कंप्लीट फीड, जहां पर कॉन्सेंट्रेट भी है, जहां पर रफेज भी है। देखिए, फाइबर यूटिलाइजेशन विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ रफेज requires soluble energy, soluble carbohydrates. Microbes फाइबर को यूज कर सकें उसके लिए soluble carbohydrates and energy form require होते हैं। soluble carbohydrates properly यूज हो सकें उसके लिए फाइबर की के अंदर इनरोड्स बननी जरूरी है। प्रोटीन प्रॉपरली यूज हो सके, या नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस ऑफ द फीड जो कि प्रोटीन है वो प्रॉपरली यूज हो सके, उसकी सारी नाइट्रोजन इस्तेमाल में लाई जा सके, उसके लिए सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी है। ये दोनों चीजें रफेज से मिल रहे हैं हमको, फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन हमको मेनली मिलती है आइदर फ्रॉम द लेगुमिनस ग्रीन्स और लेगुमिनस हे एंड ऑयल केक्स एंड ग्रीन। ये दोनों चीजें जब साथ में मिलेंगी तब ऑप्टिमम पीएच आना ह्यूमन में एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना ह्यूमन में, वो अचीव करना इजी हो जाता है और 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, वेस्टेज नहीं होती। तो वो अचीव किया जाता है कि आपको ये भी मिल रहा है, ये भी मिले, सारे कंपोनेंट मिले। एक तो हुआ उनका प्रपोर्शन, दूसरा हुआ वो एक साथ मिले, उसके लिए टोटल मिक्स्ड राशन या कंप्लीट फीड इज द बेस्ट वे। एंड इफ यू आर नॉट हैविंग द that block etc, then your sani can work as well. Sani is also a complete mixed ration, or the concentrate over the roughage along with the salt and all and water, that also works well as the TMR. So TMR is, so first thing is ration balancing. How to do that we will talk about in a bit. TMR is the total mixed ration where concentrate, roughage or all the component of the feed should be fed together. And the third point is milk, urea, nitrogen. Milk, urea, nitrogen is a very interesting aspect and अभी हम थोड़ी आगे बात करेंगे। राशन बैलेंसिंग की बात करते हैं पहले। राशन बैलेंसिंग में मैंने आपको कहा कि जो ड्राई मैटर या टोटल we the nutritionist consider all the feed on that dry matter basis, जहाँ पर हम मॉइस्चर हटा देते हैं क्योंकि वेरिएबिलिटी लाता है वो पूरी फीड में, तो सिर्फ हम ड्राई मैटर बेसिस पर बात कर रहे हैं। विद इन द ड्राई मैटर यू नीड टू बैलेंस द एनर्जी एंड प्रोटीन पार्ट, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके राशन में एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनिमल कम कंज्यूम करेगा और प्रोटीन की उसे कमी हो जाएगी, और अगर प्रोटीन ज़्यादा होगा तो उस केस में वो प्रोटीन एक्सेस में कंज्यूम कर लेगा क्योंकि वो एनर्जी कंप्लीट करने के लिए खाना खाएगा। हर एनिमल एनर्जी इनटेक पूरा करने के लिए फीड खाता है। सो व्हेन यू देयर इज वेरिएबिलिटी इन द प्रॉपर एनर्जी प्रोटीन बैलेंसिंग, कैसे करना है, कितना करना है, अभी उस पर बात नहीं है। ये समझना जरूरी है कि एनर्जी और प्रोटीन में अगर इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो ना एनर्जी प्रॉपर्ली यूटिलाइज होती है ना प्रोटीन, और देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आइदर वन और द अदर, मोस्टली प्रोटीन, आइदर इट गोज इन एक्सेस और मोर। एनर्जी ज्यादा हो गई तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अगर प्रोटीन ज्यादा हो गया तो एनर्जी के लिए कंज्यूम होगा तो प्रोटीन की वेस्टेज है। एंड वी cannot, believe me, we cannot afford to lose protein, we cannot afford to waste protein. And within energy there should be a soluble form of energy and fibrous form of energy. Soluble form of energy is in the form of soluble carbohydrates, sugars and all, and starch. And fibrous form of energy is the fiber जिसको हम ADF और NDF के फॉर्म में जानते हैं।
और उस पर हम थोड़ी एसिड डिटर्जेंट फाइबर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उस पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, उस पर हम आगे बात करेंगे। प्रोटीन में जो बैलेंसिंग करनी पड़ती है वो है कि ह्यूमन में डिग्रेड हो जाने वाला प्रोटीन और ह्यूमन से बच के निकल जाने वाला प्रोटीन, ये एक बैलेंसिंग की जरूरत है। लेकिन ये बैलेंसिंग की जरूरत हमें पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी कंटेंट, स्पेशली सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, और हमें ये बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है जब हम हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल, मोर देन 10 लीटर्स अ डे प्रोड्यूसिंग एनिमल्स पर बात करते हैं। तो ऐसे केस में हमें इस आरडीपी यूडीपी बैलेंसिंग की जरूरत पड़ जाती है। हाईली डिग्रेडेबल प्रोटीन होगा, अच्छी बात नहीं है। हाईली डिग्रेडेबल होने से ये होगा कि नाइट्रोजन इन द ह्यूमन और द प्रोटीन इन द ह्यूमन विल ब्रेक डाउन क्विकली and the amino portion of it will be available as the nitrogen, और उसको कैप्चर करने के लिए बैक्टीरिया के पास एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो ये जो नाइट्रोजन है that will be absorbed by the animal and it will be converted into urea in the body and finally that will be wasted. तो हाईली डिग्रेडेबल पूरी तरह से प्रोटीन होना अच्छी बात नहीं है, हाईली अनडिग्रेडेबल प्रोटीन होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस केस में माइक्रोब्स अंडर फैट रह जाएंगे, उनको प्रोटीन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन टूटेगा नहीं ह्यूमन में और वो आगे चला जाएगा। एनिमल को मिल सकता है लेकिन माइक्रोब्स को नहीं मिलेगा, और माइक्रोब्स को नहीं मिलेगा तो माइक्रोब्स बाकी चीजें भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि फाइबर और जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। As I said, don't worry about कि कितना देना है, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, because there are solutions available at your fingertips जो आपको राशन बैलेंसिंग में हेल्प कर सकते हैं बिना कोई ज्यादा आपको तकलीफ दिए। ये एक ऐप है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, देयर आर सो मेनी थिंग्स बाय व्हिच यू कैन डू द राशन बैलेंसिंग। ये एक ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है जो हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप की हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, दुधारू नाम से है। स्पेलिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ये स्पेलिंग सेव कर सकते हैं इफ यू आर वेल वर्स्ड विद हिंदी, क्योंकि हिंदी में अवेलेबल है। तो ये इसमें दुधारू नाम से आपको सिर्फ सिलेक्ट करना होता है, दिस इज फॉर कैटल एंड बफेलो, कि आप कौन से एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। ये आप स्क्रीन देखिए, गाय या भैंस, आपको कौन से एनिमल का राशन बनाना है, एंड वेदर एनिमल इज प्रेग्नेंट, यस और नो, यू हैव टू सिलेक्ट, एंड यू हैव टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ द प्रोडक्शन, कि कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है एनिमल, वो रेंज ऑफ प्रोडक्शन आपको सिलेक्ट करना है। एंड व्हेन यू प्रेस द राशन, देखें तो 3 ऑप्शन आपके सामने राशन के आते हैं, एक वो जिसमें आपके पास ग्रीन फॉडर है, और 2 वो जिनमें आपके पास ग्रीन फॉडर है, और एक वो जिसमें जब आपके पास ग्रीन फॉडर नहीं है। और जब आपके पास ग्रीन फॉडर है तो लेगुमिनस है कि नॉन लेगुमिनस है, उस बेस पर फर्दर डिमार्केशन होता है। यू कैन यूज दिस ऐप। अगर आप ये ऐप नहीं यूज कर पा रहे हैं, ये आपको फ्रेंडली नहीं लगती है, तो लेट मी गिव यू अ थंब रूल ऑफ राशन बैलेंसिंग। थंब रूल ऑफ राशन बैलेंसिंग ये रहता है कि, और वो होता है जब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। यू मे माइट बी नोइंग अबाउट द, देखिए कि कितना सूखा, डायमीटर की जो बात करें, कि व्हेन यू ड्राई आउट द ग्रीन, हाउ मच वेट इज लेफ्ट इन इट। सो नॉर्मली द ग्रीन ग्रासेस और द अल्फा दैट इज अवेलेबल विथ यू एट लद्दाख, इनमें 80 to 90% मॉइस्चर होता है, यानी और 100 kg अगर अल्फा या 100 kg माउंटेन ग्रास को अगर हम ड्राई करेंगे तो विल बी लेफ्ट विथ 10 to 15 kg अप्रोक्सीमेटली वेट, एंड दैट इज द ड्राई मैटर। तो अगर आप डायमीटर के टर्म्स में बात करें तो 60%, 50 to 60%, लेट्स से 60% ऑफ टोटल इनटेक ऑफ एनिमल, जितना एनिमल टोटल डायमीटर खाएगा, और एक लगभग 400 to 500 kg की अगर कैटल की बात करें तो एनिमल 10 से 12 किलो का डायमीटर खाता है। 10 to 12 kg of diameter intake per day is required by a 400 to 500 kg cattle. तो ये 10 से 12 किलो जो खाएगा, इसका 60% शुड बी फ्रॉम रफेज, एंड दिस 60% रफेज में से आप 20% डायमीटर शुड कम फ्रॉम द ग्रीन, 40% शुड कम फ्रॉम द स्ट्रॉ, और जो बचा हुआ आपका डायमीटर है 40%, ये हमें कॉन्सेंट्रेट से देना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट से देने वाले उसमें आप 40% ग्रेन्स यूज कर सकते हैं। यू हैव अमेजिंग बार्ले एंड व्हीट अवेलेबल विथ यू। याद रखिएगा, इंटैक्ट ग्रेन कभी नहीं देते हैं हम कैटल एंड बफेलो को। यू नीड टू ग्राउंड इट, कोर्स ग्राउंडिंग करनी होती है, बहुत बारीक नहीं पीसना होता है, और मोटी मोटी ग्राइंडिंग करनी होती है, तो वो आप ग्राउंड कीजिए, ग्राइंडिंग कीजिए। 40% ऑफ द कॉन्सेंट्रेट, 40% बचा, 60% तो फॉडर से हो गया, रफेज से हो गया,
40% बचा, इस 40% का 40% ग्रेन्स के फॉर्म में आना चाहिए, रिमेनिंग 30%, 25 to 30% डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑयल केक आपके पास है, ऑयल केक से आना चाहिए, एंड रिमेनिंग बचा हुआ ब्रान, पॉलिश, इन चीजों से आता है। जो आप ग्रेन्स दे रहे हैं या जो ऑयल केक्स दे रहे हैं या ब्रान या पॉलिश दे रहे हैं, सबसे आसान तरीका है बैलेंसिंग का कि मिक्सिंग कर दीजिए। इफ यू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ ऑयल केक्स, give both in any proportion you want. If you have more than one type of grains, give both in any proportion you want. So this is the basic way of doing the ration balancing thumb rule, which doesn't go wrong. It anyway, you don't need software, you don't need expert for that, and this app is there for you. MUN पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, वहां मैंने एक पॉइंट सजेस्ट किया था, मिल्क यूरिया नाइट्रोजन. नाउ दिस मे बी समथिंग न्यू फॉर मोस्ट ऑफ यू. ये आप इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस एक बेस बात समझिए कि हम रूमिनेंट्स की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन के फॉर्म में बात करते हैं. नाइट्रोजन इज इक्विवेलेंट टू प्रोटीन इन केस ऑफ रूमिनेंट्स, क्योंकि र्यूमन में जो माइक्रोब्स रहते हैं, इनके बारे में बता रहा था, इनमें कैपेबिलिटी है कि ये नाइट्रोजन से अगर इनको एनर्जी दे दी जाए, बाकी चीजें अवेलेबल हो, सल्फर अवेलेबल हो और एनर्जी अवेलेबल हो, तो ये नाइट्रोजन से प्रोटीन बना लेते हैं. तो इनको फीड में जो प्रोटीन आ रहा है उसकी जगह हम रूमिनेंट्स केस में फीड नाइट्रोजन पे ध्यान देते हैं. सो विद द फीड नाइट्रोजन, उसका क्या होगा जब फीड में जो नाइट्रोजन खाया इसने, चाहे वो रफेज से हो, कॉन्सेंट्रेट से हो, एनिमल ने खाया, वो ह्यूमन में जाके या तो डिग्रेड होगा या नहीं होगा. तो इट कैन बी अ ह्यूमनली अनडिग्रेडेड नाइट्रोजन और ह्यूमनली डिग्रेडेड नाइट्रोजन. तो जो ह्यूमन में डिग्रेड हो जाएगा वो क्या होगा, वो या तो माइक्रोब पकड़ के अपने बॉडी बना लेंगे, तो इट विल बिकम माइक्रोबियल प्रोटीन और माइक्रोबियल नाइट्रोजन भी में से, और या फिर ये ह्यूमन में गैसियस फॉर्म में घूमेगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में यूरिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा. यही दो काम होंगे, डिग्रेड हुआ या नहीं हुआ. डिग्रेड हुआ तो माइक्रोब बन गया, प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, या एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में पहुंच गया ब्लड यूरिया. जो माइक्रोब फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ, वो फाइनली अनडिग्रेडेड वाले के साथ जाएगा इंटेस्टाइन में, और वहां पर डाइजेस्ट हो जाएगा या एक्सक्रीट हो जाएगा, या तो फीसेस में आ जाएगा, डंग में आ जाएगा, या डाइजेस्ट हो जाएगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में अमाइनो एसिड पहुंच जाएंगे. फाइनली एनिमल को अमाइनो एसिड्स या तो ब्लड में पहुंचे या यूरिया के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हुआ, और यहां पर आके फिर वो फ्लक्सिंग होती है कि वो ये ब्लड यूरिया यूरिन में चला जाता है, या दूसरे ये ब्लड नाइट्रोजन मिल्क प्रोटीन बनाएगा, या ग्रोथ के लिए टिश्यू के लिए यूज होगा, अदर प्रोटीन के फॉर्म में किसी फॉर्म में यूज होगा, या ये ब्लड यूरिया जो एक्सेस होगा वो ब्लड यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होगा वो ब्लड यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन फाइनली यूरिन और फीसेस में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. सो थिंग इज दैट एंड फाइनली यू गेट द मिल्क यूरिया. तो मिल्क यूरिया बेसिकली ब्लड यूरिया के साथ एक फ्लक्स में रहता है, कि ब्लड यूरिया एंड मिल्क यूरिया दे आर इन फ्लक्स, एंड इन दिस फ्लक्स आप मिल्क यूरिया से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लड में कितना यूरिया है. नाउ थिंग इज दैट अगर हम बिना किसी एनिमल को प्रिक किए, बिना ब्लड निकाले, बिना उसकी एनालिसिस में जाए, हमें बहुत दिक्कत आती है कि कोई भी एनिमल अगर सही खा रहा है कि नहीं खा रहा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है कि नहीं है, तो हम उसमें मिल्क यूरिया नाइट्रोजन का लेवल अगर देखें, मिल्क में यूरिया नाइट्रोजन का लेवल देखें, इसके लिए सिंपल सी किट होती है, बहुत सिंपल सा काम होता है. इसमें हम देखें और अगर ये 10 to 40 मिलीग्राम पर DL के लेवल में है तो एनिमल इज एन ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल रेजिम, और वो अपनी जेनेटिक कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है. लेकिन अगर इससे ज्यादा है या इससे कम है तो वी नीड टू डू मैनिपुलेशन विद द फीड. अगर ये कम आ रहा है तो एनिमल को प्रोटीन कम मिल रहा है, या जो प्रोटीन मिल रहा है वो डैमेज प्रोटीन है, हीट डैमेज है, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है. अगर ये ज्यादा आ रहा है तो आप प्रोटीन को वेस्ट कर रहे हैं. उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने उसको सॉल्युबल एनर्जी डेफिशिएंसी रखी हुई है. सो मिल्क यूरिया नाइट्रोजन प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है फील्ड में. इसके एस्टिमेशन से हम पूरे हर्ड का या पूरे एरिया का राशन बैलेंसिंग कर सकते हैं. Another strategy that I will suggest and will quickly complete in 5 minutes is to go local. Go local basically means कि आपके पास जो alternate available resources हैं, आपको सबकी जगह के फॉर्मुलेशन यूज करने की जरूरत नहीं है. आपके पास जो alternate available resources हैं, इनको आप incorporate कीजिए फीडिंग रेजाइम में,
और इनसे बेनिफिट लीजिए। कौन कौन से अनकन्वेंशनल फीड स्टफ्स या लोकल फीड स्टफ्स जो मैं सजेस्ट करूंगा, उनमें सबसे पहले आता है आपके यहाँ पर ट्री लीव्स। देयर आर सो मेनी ट्रीज, स्पेशली द विलो एंड द पॉपुलर, जिनकी लीव्स ट्रेडिशनली यूज की जाती थी और यूज की जाती हैं अभी भी लद्दाख में एज अ फॉडर। दीज आर अमेजिंग फॉडर लीव्स। इनके साथ जो प्रोटीन का मैं अभी आगे उस पर बात करूंगा कि उसमें कितना क्या उनकी कॉम्पोजिशन है, बट these tree leaves can be a very good source of nutrition when things are not available from the traditional feed stuffs. Fruit and vegetable waste आपके पास अवेलेबल है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट का जो पोमेस है, एप्रिकॉट जो वेस्ट एप्रिकॉट, इफ यू रिमूव द कर्नल्स, उसमें से आप सीड्स निकाल दीजिए तो बाकी एप्रिकॉट है, दिस कुड बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके पास ट्यूबर क्रॉप्स है, ट्यूबर क्रॉप्स लद्दाख में और कुछ नहीं, ट्यूबर क्रॉप्स है। ट्यूबर क्रॉप्स की अपनी कल्टीवेशन है और ठीक ठाक कल्टीवेशन है। ट्यूबर क्रॉप्स सारा का सारा कंज्यूम नहीं हो सकता ह्यूमन के लिए। इस ट्यूबर क्रॉप्स को बहुत तरह से यूज किया जा सकता है एनिमल फीडिंग में। यू हैव वीट्स, देयर आर सो मेनी वीट्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर सुटेबल फॉर लाइवस्टॉक टू कंज्यूम। उसमें कोई ऐसी पॉइजनस चीज नहीं है जो लाइव स्टॉक नहीं, उनको बहुत तरह से उनको ड्राई करके यूज कर लीजिए, और अगर पॉइजनस चीज है भी तो उसका भी यूज हो सकता है, अभी थोड़ी आगे बात करते हैं। एंड देन यू हैव रिसाइक्लेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, बहुत तरह से पोल्ट्री फार्म वेस्ट निकलता है या जो बेडिंग मटेरियल निकलता है पोल्ट्री फार्म से या कहीं से, वो भी यूज किया जा सकता है। लीव्स में I won't go in detail of that, but let me tell you the protein profile of leaf is very good. Protein प्रोफाइल में आप ये देख सकते हो आरडीपी, यूडीपी, और ये इसको मिक्स किया जा सकता है दूसरे ऑयल केक्स के साथ। लीव्स को ड्राई करके यूज किया जा सकता है, लीव्स को ग्रीन खिलाया जा सकता है, लीव्स को साइलेज में मिक्स किया जा सकता है, और लीव्स, tree leaves can be a very good supplement that balances that elevates the reproductive profile and elevates the health status of the animal. Leaves में टेनिन्स, कंडेंस टेनिन्स करके एक सब्सटेंस होता है जो कि रूमिनेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड जो लीव करती हैं, ये बाकी न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्ट भी करता है, उनके वेस्टेज को रोकता है, और उसके अलावा ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को भी कम करता है। सो टाइम की कमी है, मैं लीव्स की डिटेल में और अभी नहीं जाता, लेकिन ये हाँ, ये है डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट ट्री लीव्स फाउंड इन लद्दाख। इसमें आप खास चीज देखिए विलो और पॉपुलर में, यहाँ पर द क्रूड प्रोटीन कंटेंट इज अप्रोक्सीमेटली 20%, विच इज वेरी वेरी गुड इनफ। और आपको जब आप लेगुमिनस फॉडर की बात करते हैं तब आपको जो क्रूड प्रोटीन कंटेंट मिलता है ऑन डायमीटर बेसिस, इट इज रफली 30 to 35%। सो एंड नॉन लेगुमिनस की बात करते हैं लाइक व्हीट एंड बार्ले फॉडर, इन दैट केस इट इज 7 to 8%। सो इट इज दिस प्रोटीन प्रोफाइल कुड बी मच बेटर। ओनली थिंग इज कि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि लॉपिंग परसेंटेज, 40% लॉपिंग परसेंटेज एंड लॉपिंग इंटेंसिटी की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 to 4 months में, अगर एक ट्री पर 3 से 4 महीने के बाद आप ले सकते हैं लीव्स, और जितनी लीव्स हैं उसकी 40% लीव्स आप एक बार में कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो सस्टेनेबल है और वो एनिमल को खिलाई जा सकती हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट में स्पेशली ये एप्रिकॉट में खास ध्यान रखने की बात एक ही होती है कि इनके कर्नल्स को लेके कि इनके जो सीड्स हैं उसमें एमिग्डालिन होता है जो कि HCN पॉइजनिंग कर सकता है एनिमल्स को। तो वो जब जो एप्रिकॉट केक बनता है, एप्रिकॉट केक कैन बी यूज फॉर लाइव स्टॉक, बट प्रायर टू दैट डिस्टिलेशन से हमें रिमूव करने पड़ते हैं एमिग्डालिन, अदरवाइज इट कुड बी डेंजरस टू लाइव स्टॉक। वो आपको ध्यान रखना है। Preservation could be another way of handling the crisis of feed resources during the winter season in Ladakh. And normally preservation हम इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर खराब कर देता है फॉडर को, और ग्रीन फॉडर खराब हो जाता है। खराब इसलिए हे प्रिपरेशन की जाती है, लेकिन विंटर में एनिमल पानी कम पीता है, पानी कम पिएगा तो मिल्क प्रोडक्शन कम आएगा, पानी कम पिएगा तो मेटाबॉलिज्म हैम्पर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पानी तो बचाने के लिए जो प्रॉब्लम आती है, जो एक प्रॉब्लम लद्दाख की है, तो वो यहाँ पर I would suggest that strategy needs to be changed by a different name, and here we should preserve fodder for water. So instead of hay, silage is highly recommended.
Silage is highly recommended because it can be used as the year-long supply. It could bring much more predictability to the production in case of Ladakh. Silage में एक जो major revolution आया है, जो conducive हो गई है silage remote areas के लिए, because you don't need a silo or a permanent structure to make silage. These silage bags are available with a triple layer closing, and ये कहीं भी रखे जा सकते हैं, एक के ऊपर एक रखे जा सकते हैं, and इनमें these are available in the capacity of 3 to 6 tons, और इसमें आराम से 3 to 6 quintals, और इन्हें आराम से बनाया जा सकता है, आराम से रखा जा सकता है. इनोवेटिव साइलेज मेकिंग इज जस्ट अ पॉइंट आई वुड लाइक टू सर्ट कि आप साइलेज के साथ और बहुत से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो कि वहाँ रिक्वायर्ड है. दिस इज वन थिंग, बीट साइलेज. हमने पार्थिनियम पे एक्सपेरिमेंट किया है. उसका जो एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर होता है पार्थिनिन, वो डिग्रेड हो जाता है जब हम आप उसकी एनसाइलिंग करते हैं, जब उसकी साइलेज बनाते हैं. ऑल द ट्यूबर्स एंड द फ्रूट्स एंड they can be added to the silage. You can have vegetable waste as the silage. You can have fortified silage by mixing the things which can protect the silage protein and the silage nutrients by adding, such as tree leaves. So this is what I want to say. Thank you so much. I think let me stop the. Let me come back to the. Yes. Let me. Yeah. Okay. Yeah. Over to you. Thank you, Dr. Rastogi, for a really informative talk. There are I need 2 quick answers from you. Yeah. What is the cost of these block making machines, and how these are can be designed at home, and how many blocks can be prepared? And also one question, sir, please tell us about the antibiotic and residual free milk productions. Okay. One thing, first is the block making machine. The block making machine's design is available here with us. We have outsourced that to many KVKs here in the Esquas Jammu. They have installed it at that place. So anyone who is particularly interested in that block making machine can contact us, and a simple design can be shared, or one particular block making machine that is with our commercial company. They have purchased the technology from the university. So for that particular, they can contact them, and that company is able to. I think they will be able to supply that at Ladakh as well. So they can contact me or my department anytime for these block making machine. The cost is the fabrication cost only, and that was at our end. It was when it was in our end, it was 7,000 to 12,000 per machine, and the blocks can be made one person can make up to 20 blocks in a day. And the only bottleneck in block making is these blocks need to be dried in the sun, because we are not using any electricity or any drying option. So that need to be dried in the sun. And summer of Ladakh is very well suited for preparing these blocks, and these can be stored for a year or something without any issue. And they can be prepared from local resources. No need of getting input from and importing any other thing. And regarding the other question of antibiotic free milk production, the recommendation, and Dr. Nilesh was well suited for that to give this answer. The recommendation is you need to provide a withdrawal period of 7 days for milk consumption if the animal is on antibiotic. If antibiotic is being used for treatment purpose, तो उसके बाद 7 दिन तक आपको मिल्क ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें रेसिड्यू आ सकता है. एक दूसरा कंसर्न जो आता है वो एंटीबायोटिक रेसिड्यू से ज्यादा आता है, वो आता है ऑक्सीटोसिन रेसिड्यू का, कि ऑक्सीटोसिन इज द मिल्क लेट डाउन हार्मोन दैट इज बीइंग इंजेक्टेड और बीइंग यूज्ड बाय द फार्मर्स. वो जो एक इंजेक्शन लगाते हैं और मिल्क में आ जाता है. सो लेट मी टेल यू कि वो बात थोड़ी सी एट आवर लेवल, एट द साइंटिस्ट लेवल, दैट इज नॉट वेरी वेल एक्सेप्टेड, क्योंकि वो नहीं होता है. ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ जो है वो बहुत कम है. तो जब तक वो मिल्क में अब इमीडिएट मिल्क लेट डाउन भी होगा तो ऑक्सीटोसिन मिल्क में आएगा भी तो मिल्क में ही खत्म हो जाएगा. एंड रॉ मिल्क कंजम्पशन इज बेसिकली हमारे पूरे इंडिया के में नहीं है, तो नॉट एन इशू विद दैट. सो बेसिकली अगर आपके एनिमल एंटीबायोटिक पर है तो इट्स गुड टू प्रेफर अ विथड्रॉल पीरियड ऑफ, let's say if it is not possible for you to go for 7 days, let's practice a withdrawal period of 4 days. Okay.
Thank you, Dr. Sogi. I request Ms. Chosyang to please summarize the talk for our participants. Thank you very much, Dr. Ankur Rastogi, for such a wonderful talk and letting us know about the field deployable nutritional intervention to augment the livestock productivity in the resource-limited hilly terrains such as Ladakh. We got to know about the cycle of reproduction of the cattle in order to receive the best produce of cattle. We also learned the cow for the year formula, where we kept the nutrition, reproduction, health, and production of cattle and dairy produces in mind. Thank you for providing us handy solution to the problem faced by dairy and milk farmers. We thank you very much for helping us in the genesis of LCA Hub, and we wish you will stay in touch with the LCA Hub in the future also. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you. Before we move further, I request Dr. Rastogi to please answer a few questions in the chat box. There are a few questions I left unattended. So, sir, if you want to answer, please answer in the chat box. Okay. So I'm moving further to our next speaker, Ms. Aparna Divakar. Before I introduce Ms. Aparna, I sincerely apologize to our experts and the participants because we are running almost an hour and a half late by our schedule. I'm sincerely sorry for that. Ms. Aparna Divakar is the head marketing and communication for Ladakh Technologies and its subsidiaries. She has previously worked as the global partnership manager for GARV, a smart sanitation firm. She holds a postgraduate degree in rural management from Institute of Rural Management, IRMA, and she is a BTech in civil engineering from College of Engineering, Thiruvananthapuram. So without any further delay, I request Ms. Aparna to present his talk and technology demonstration. Thank you, Aparna, for Hi. Thank you for inviting me. Am I audible? Yeah, yes, you are audible. Yes. Yeah, so I'll just press in my screen let me just, yeah. Is my screen visible? Yes, it's visible. Yes, please. Okay, so I had marketing for Livestock Technologies. We are an end-to-end dairy digitization firm. We started in 2011 and have been digitizing the Indian dairy sectors. We were the pioneer in the field. So we predominantly have IoT solutions and AI and ML technology as well. So our philosophy, our vision is to empower Indian smallholder farmers through our technology and enable productivity, quality, and traceability in the supply chain. So this is just a view of the problem in India. And we haven't worked much in Ladakh. So this is more or less the context for whole of India, where the profitability of farmers is very low. There isn't enough traceability in the system. There is no access to formal lending in the dairy channel, and but then there are like 50 million smallholder farmers. There are 300 million cattle. We're the biggest dairy producer in the world, and dairy and livestock together constitute 7.6% of the India's GDP. So this is just again the overall view of how big the sector is in India, and but even though we are the leading producer of dairy, of milk, we are still not a global player in terms of exports. So this just means how much potential there is for us to tap and expand. Dairy is still largely unorganized, but with the organized sector is thankfully picking up. Now, this is where we start talking about what we do in the system. So the supply chain is, for the dairy supply chain, is usually from farm that goes to a collection center,
where the milk, the farmers pour the milk to the dairy, and that milk is collected, and then it goes to a chilling center where it is chilled to 4 degrees centigrade for optimum milk preserving the freshness and optimum temperature. Then it goes to a processing and packaging facility, and then to the customer. So we have solutions at the farm, at the collection center, at the chilling center, at the processing and packaging level, where we use our IoT, our artificial intelligence technology to kind of ensure there is transparency and traceability in the system, and also improve productivity. So at the farm level, our solution is called a Move On device, which is a kind of a Fitbit for a cow, which tracks. 1 second. Okay, fine. Oh no, 1 second. Seems to have a mild technical issue. Yeah. Okay. So at the farm level, we have a device called Move On, which is a wearable which is worn around cow. So it tracks the activity, the sitting standing ratio, and is able to give a overall understanding about the animal's health. So this is a very, it's a small device. It's also connected to a herd management application. So whenever a cow goes into heat, it is able to alert the farmer through a notification in the mobile app. Or it also sends the alert to para-vets and vets nearby, so they can check the cow, they can call the farmer and check if the cow is in heat, and provide artificial insemination. So the farm level Move On device and app enable artificial insemination at the right time, which leads to immense improvement in number of days of milking. Because the shorter the intercalving period is, the more the farmer is able to earn. So the Move On app also enables a lot of, it has a host of other features. It's able to track all the health records of the cow, like vaccination, deworming, and it's also able to automatically generate these alerts. So, whenever artificial insemination has been done and the PD check, the pregnancy detection check needs to be done, it sends an alert to the para vet saying this cow has been inseminated on X date. Now it has you need to do a pregnancy detection check. Also mastitis check and things like that. It's also able to record the genetics of the cow, monitor the heifer, tell the farmer regarding when the heifer, about heifer growth, and and provide a host of advisories. So we couple these with a farm improvement services, where we also provide veterinary solutions to the farmers. Now, in the collection center, we have something called a smart automated milk collection unit. So what smart automated milk collection units do is that they able to digitize the entire information that comes to when somebody goes to a collection center to pour the milk and test it. So a lot of times the testing is not very scientific or accurate, and farmers end up losing a lot of money that way. So what they do is they might pour water, which leads to loss of fat and SNF in the value chain. So to prevent this, we are able to give farmers, first of all, accurately test the quality of the milk, then plug the rate chart to the quality, so that farmers are incentivized to pour better quality of milk. And it also detects adulteration when the milk has been diluted, or and things like that. So and all of these data are sent directly picked up from the devices, and it goes to the cloud. So what happens is, somebody who is sitting, an agent who is
sitting at the collection center wouldn't be able to fudge this data. So there is transparency. The farmer is also able to see through a screen as to what was the quantity, what was the quality, and what is the, and they also receive a receipt at the end of it. So this creates a level of transparency in the system. It has, wherever we have deployed this, farmers have seen immense improvement in terms of the transparency. They've seen that, and dairies have seen that they have gotten better quality of milk. Now at the next stage is a chilling center, and what we have a similar solution, which kind of checks the quality quantity parameters again at the chilling center level. This creates a link between the collection center and the chilling center, resulting in a traceability. It's like which kind of prevents any adulteration that might have happened during transport. So it's like a can level tracking is available, where we are able to track, okay, this can had this much of fatness enough, and this much is what we got when it was at the chilling center. So it creates a traceability there. And we also have a cold chain monitoring solution, which monitors the volume, the temperature, the power consumption, and the status of electricity. It's like, is it on or off? Is it the grid, or is it on the generator? So what it enables to do is optimally chill milk. So it is able to turn on and off the bulk milk cooler depending on what temperature it is. It also maps all the volume and everything that comes, so that there's a traceability there. Looking at the graph, you can see if somebody has taken out milk or poured water, and all this alerts are sent as SMSs. So farmers also receive SMS based on what their milk pouring. So there's a lot of trust in the system. Now this is, as I explained, this is on the extreme left is a cow with a move-on device. It helps track the activity and health of the cow. And the next one are the app screenshots of the move-on application. We also have face recognition system, body image recognition system for cows, which it's called Moo KYC. What it does is it enables easy identification of cow. So right now, tagging is done either by ear tag or tattooing or something like that. And it is a little intrusive to the cow. These are very easy. It's very affordable. It's just an app. And what it does is, like, you just have to scan the cow's image, and it identifies the cow based on computer vision and creates a unique ID for the cattle. And this helps in terms of insurance and financial service delivery and cattle trading, because once the facial recognition is also linked to their health records, it creates a transparent system where all the details of the cow is available. Now, I talked about this earlier. This is the smart procurement and cold chain monitoring solution. So this is the milk. On the left is a milk collection center. It would have a tab where all the devices are pulled, a testing system, a stirrer display unit where all the details can be viewed, and similar system on the children center. Now, because of all the data that has been collected and are analyzed through the system, we are able to offer a rich, we're able to offer rich solutions, rich insights regarding a lot of the things. So on this farm improvement side, we're able to give advisory for farmers in terms of ration balancing, in terms of giving them advisory regarding nutrition and things like that. And or tell them if the farm, if depending on the standing ratio of the cow,
they're able to alert them regarding if the cow is not as healthy or it's getting sick. So any deviation from the baseline, the usual behavior of the cow, if there is a deviation, we are able to alert farmers to either contact the veterinary center or pay attention to the nutrition of the cow. And so what all of this kind of can lead to is access to a premium market for the farmers. So when all of these aspects have been checked, there is traceability in the system, it gives farmers access to a premium niche segment of consumers who wants to know if the milk they're drinking is safe, it's pure. And we're able to do that with our traceability system, where you can scan a QR code, and then it shows where the product has come from, what testing has been done on it, and how safe it is. We also so the transition of a smallholder farmer to a dairy entrepreneur is incomplete, or it doesn't happen if there is no access to financial inclusion. And financial inclusion also is a tricky aspect to farmers, because it's a fairly there would be documentation involved. The banks may not be accessible, and there are several other challenges that farmers usually face. One of them is also an accurate credit worthiness assessment of farmers for financial sector to lend to them. So we have a lot. So with the help of future tech solutions like IoT and AI, what we are able to do is first of all, digitize the payments that are due to farmers from the dairy company. So the farmers can get the payments in their account. Now, when they receive an account and farm, the main challenge here is withdrawing the money. If the ATM is several kilometers away, it becomes hard for the farmers to access to get cash. So what we've done is enable Aadhaar-based cash withdrawal systems at the collection center for farmers, where they can simply scan, with the help of their biometric data, they can withdraw money at the collection center. So a milk collection center now acts like a smart banking point where they can withdraw money. We also provide them access to financial services like loans, insurance, banking, saving, etc. We do this through Celebs does it through our MoPay fintech solution and our partner network, which consists of people like India Post Payment Bank, Kotak Mahindra, SBI, Airtel, DBS, Avanti, Jana Bank, etc. So with the help of the alternate credit worthiness assessment, which is based on milk pouring, we are able to lend to farmers and provide them insurance. So what has been the impact of all of this? So in one case study that we did, we were able to see a 130x jump in the net income of the farmers. So from rupees 35 per liter, they were able to earn about 4,000 and from an 8 liter per day, it was about 250 liter per day in terms of the productivity. And also in terms of the money that has been paid by the customer, that has been a significant jump. Now, this is due to a combination of factors like improvement in productivity, improvement in the quality, and increase in the number of cattle, so that through financial inclusion, that they are able to increase the quantity of milk and the number of animals, and create a better traceability, leading to an access to a premium market segment, which is able to pay them more. Apart from that, we are also able to see environmental impact due to increase in productivity, leading to
lower energy consumption in the cold chain management, about 25% reduction in energy consumption because due to real-time monitoring, and 60% reduction in methane emission due to improved cattle productivity. So currently, Stellas is touching about 13 million liters across India. We're in touch with about 2.8 million farmers, and we have a 36,000 points of presence. So again, this is about the environmental factors that I mentioned. That's about it from my end. Do let me know if you have any questions. Yeah, thank you, Ms. Aparna. That was really informative talk for me because being an engineer, I could relate myself with the technology. You very well said that how computer vision and cloud computing can augment the complete supply chain with checks and balances, and how KYC could be done for the animals. And it was really a great talk to hear. And also, I would like to add here that we got to know about the quality and productivity, how traceability can be implemented in supply chain using IoT and other measures. And thanks for letting us know about the Stell apps. We got to learn how digital access network of move on platforms and smart procurement such as Aadhaar card based cash withdrawal system MUPI. That's really commendable towards digital economy. We believe this information will be helpful for the people in Ladakh. Because there are no question, but I have a question. The main questions comes how you are bridging the gap between the startups and the marginal farmers who are sitting who are somewhere in Himalayan terrain, somewhere in Himachal or Ladakh. How you bridging those gaps and reaching to those farmers? So generally, what we do is we work with dairy companies. So Celeb's partners with the dairy who is already working with this people, or also we have an agent model. Depending on the dairy or a group of people who've come to pour milk at one center, and it's an agent who is collecting milk for them. We provide our solutions to these agents or dairy, and it is through the dairy or the agent that the farmers kind of comes to access our solutions. It also helps because some of these technology are they need it's technical, and it helps when it's somebody is there to handhold the farmers on how to use the technology as well. Yeah, okay. So thank you very much, Aparna. I believe many of our attendees today would be motivated to do something or some way collaborate with Stell apps. I believe they got to learn a lot of things here from how they can also use technology in realizing their dreams of being an entrepreneur. I believe your talk was really informative and helpful for those aspirants. So with that, thank you, Aparna, for joining and being patient, running late. But thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you. With that, we are moving to our next speaker. He's a really famous guy, and I got to know, read about him yesterday also in some news. Please meet Mr. Sri Shankar Nair. Sri Shankar Nair is a CEO and co-founder at Brainwired. He is a young entrepreneur who has won the Agri Hackathon and recently has featured in Shark Tank India. I believe अगर आप लोगों ने देखा हो सोनी लिव पे एक प्रोग्राम आता है Shark Tank जहां बड़े-बड़े इंडस्ट्री आते हैं और स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करते हैं और उनको फंड्स करते हैं. So Sri Shankar Nair was recently featured in that program also. Brainwired is an agri-tech startup which has developed a livestock health monitoring and tracking system named Livestock that uses
an IoT-based ear tags and a unique machine learning algorithm which he developed to identify sick and pregnant livestock and alert farmers accordingly. So without any further delay, Srishankar, over to you. Srishankar, you are on mute, Srishankar. Please unmute. You know? Yeah, good. Great, thanks. So thank you for inviting me to this platform, and it's a great opportunity to come here, and I've been asked to speak in Hindi if I can, so that because everyone who's listening can understand. So मैं हिंदी में बात करता हूँ ताकि सबको आसानी समझ में आ जाए। तो आज तो सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म बुलाने के लिए, और होप जो मैं सेशन लेने जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा लॉन्ग सेशन नहीं लूँगा क्योंकि जानता हूँ काफ़ी लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो मैं शॉर्ट से आई विल कीप इट शॉर्ट। और मैं IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI हम सब ने सुना है, तो AI का नॉर्मली कैटल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से लिंक होता है, तो आज मैं IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूँगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कैटल फार्मिंग में और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं एक नॉर्मल कैटल फार्मर के लिए। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, जस्ट yeah, so I hope the screen is visible. Yes, your screen is visible. Yeah. So I'll speak about IoT based cattle health monitoring. So before I start, I want to give an idea of what actually IoT is all about. So it's basically Internet of Things, यानी कि जैसे कि हम काफ़ी सेंसर्स का यूज़ करके कैटल या कोई भी अदर लाइफ स्टॉक का जो भी स्पीसीज गाय जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, तो सेंसर का यूज़ करके हम उनके जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम उसको प्रोसेस करके क्लाउड में प्रोसेस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रोसेस करके हम फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं कि उनका जो सेहत क्या है, क्योंकि जो भी गाय और गोटा ये सब बोल नहीं सकते, तो उनको कुछ बीमारी हो गई या उनको कुछ तकलीफ हो रही है, तो हमें उसको समझने के लिए एक्चुअली IoT का और AI का इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले होता है उस चीज़ में। तो बेसिकली हम अगर अब एक गाय का कंडीशन लें, तो गाय के जो सिचुएशन है उसमें बॉडी में ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे हम सेंसर लगाकर उसके हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, उसके रिप्रोडक्शन साइकिल के बारे में जान सकते हैं। तो जैसे कि आप सबने शायद देखा होगा कि कॉलर, गाय के गले में जो कॉलर लगाया जाता है, बहुत एक फेमस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम गाय के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा हम गाय के कान पे लगा सकते हैं, उसके मजल पे लगा सकते हैं, उसकी पूँछ पे लगा सकते हैं, पैर पे लगा सकते हैं, और इवन ऐसे सेंसर्स भी हैं जो कि गाय के पेट के अंदर हम गाय को स्वालो करके उसके पेट के अंदर जाके उसके पेट के अंदर की एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक कर सकते हैं, जिसे बोलस कहते हैं। जैसे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड में हर जगह मॉनिटर अवेलेबल है। और अगर आप इससे पहले जो हमारे स्पीकर आए थे उनमें से एक डॉक्टर साहब ने कहा था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है लाइफ स्टॉक का और जो कैटल फार्मिंग का, वो दुनिया में सबसे बड़ा है। अगर आप देखें तो क्लोज टू 100 मिलियन डेयरी फार्मर्स हैं इंडिया में, लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसके मुकाबले बहुत कम है। सबसे ज़्यादा मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो US में होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास ज़्यादा कैटल है, वो इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने कैटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उनको बहुत बेहतर से बेहतर फीड प्रोवाइड करते हैं, उनको बेहतर केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। और इंडिया के फार्मर जो हैं वो कई सालों से, कई सदियों से अपना जो नेचुरल फार्मिंग है उसी को कंटिन्यू करते लेकर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी जिसमें काफ़ी सारा मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो चीज़ है उसको अभी चेंज करने का समय आ गया, क्योंकि दुनिया बदल रही है, उसके हिसाब से फार्मर्स को भी बदलना है। तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो टेक्नोलॉजीज़ को हम जैसे अडेप्ट करेंगे, वो टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा हमें हमारी डेली लाइफ में उसका बेनिफिट मिलेगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है कैटल फार्मर्स का वो बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें IoT जैसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक सेंसर का जो भी गाय के किसी भी बॉडी पार्ट में लगाया जाए उसका अपना ही एक रोल होता है। जैसे गले में लगा दिया तो वो कैटल कितना देर चल रहा है, बैठ रहा है, खाना खा रहा है, रूमिनेट कर रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। और इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि जो कैटल है वो हेल्दी बिहेवियर है कि नहीं, उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हुआ है कि नहीं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि आप सब जो भी डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है सब जानते हैं कि कैटल के जो
बिहेवियर है, जैसे कैटल का अगर हेल्थ ले लें या कैटल का हीट साइकिल ले लें, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है मैनुअल में। मतलब अगर एक स्टैटिस्टिक देखा जाए तो इंडिया में 20,000 करोड़ रुपए का एनुअल लॉस होता है जस्ट बिकॉज फार्मर जो है वो डिजीज को ट्रैक नहीं कर पा रहा टाइम पे। तो ये जो अमाउंट ये बहुत बड़ा है फॉर कंट्री लाइक अस, एंड उसका जो मेन रीज़न ये है क्योंकि हम सब इंस्टिंक्ट और मैनुअल लेबर पे बेस करते हैं कि जो फिजिकल सिम्टम्स जब आएंगे तो हमको पता चलेगा कैटल बीमार है कि नहीं या कैटल में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको दूर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, वो पहले ही पता कर सकता है कि कैटल जो है वो बीमार होने वाला है या नहीं, या बीमारी के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन आई, एक फार्मर अगर उसके पास 10 या 20 कैटल है, वो हर रोज हर एक कैटल को चेक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको काफी टाइम कंज्यूमिंग है, और ऑब्वियसली फार्मर्स को और बहुत काम भी करने पड़ते हैं। तो उस जगह पे टेक्नोलॉजी आपके लिए हर एक फार्मर को हर एक कैटल को एनालाइज करके बता सकता है कि कैटल हेल्दी है या नहीं, सिक है कि नहीं। सेम हीट साइकिल में भी, जिनके पास गाय है उनको पता होगा कि हीट साइकिल का ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही समय पर ट्रैक नहीं कर पाते हो तो फिर आपको दोबारा 1 महीना वेट करना पड़ता है दोबारा ट्राई करने के लिए, और वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लो रिप्रोडक्शन रेट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है कैटल इंडस्ट्री में। तो उस सब का सोल्यूशन जो है वो एक टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पॉसिबल है, और वो जो टेक्नोलॉजी है उस पर आई बिलीव आज के एंटरप्रेन्योर्स को काम करना चाहिए, जैसे कि हम काम कर रहे हैं या स्टेल लैब्स काम कर रहा है। तो जो नए नए टेक्नोलॉजीज हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस है आज के फार्मर्स के लाइफ में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो उसमें एक बहुत बड़ा सिनेरियो, तो ये मैं जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ कैटल में इसलिए इम्प्लीमेंट की बात करने जा रहा हूँ क्योंकि हमें जो नॉर्दर्न बेल्ट से या नॉर्थ ईस्ट से, इवन नेपाल से हमें कॉल आ चुका है, लद्दाख से भी हमें काफ़ी फार्मर्स ने एक्चुअली कॉल किया है इन रिसेंट टाइम्स, टेलिंग कि उनका कैटल कहाँ जा रहा है जीपीएस में, वो पता करने के लिए। कई वाइल्ड एनिमल्स का अटैक हो गया तो कैटल कहाँ गया पता करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कैटल ट्रैकिंग में होता है वो है जीपीएस ट्रैकिंग, यानी कि कैटल का जो लोकेशन है वो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा ट्रैक करो कि वो कैटल एक दिन में क्या क्या कर रहा है, यहाँ कहाँ पर है, अचानक से कैटल दिख नहीं रहा है तो आप ट्रैक करके पता करो कि वो कैटल कहाँ जा रहा है। उसे कहते हैं जीपीएस ट्रैकिंग, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली डेयरी फार्मर्स को ले लो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे कॉल्स आते हैं फार्मर्स के जो कि कोई गाय को चुरा के ले गया और पता नहीं चला कि कहाँ गए। एक बार तो फार्मर ने कॉल किया था, कहा था कि एक रात में 9 गाय चोरी हो गए और पता ही नहीं चला कि वो गाय कहाँ चले गए। तो ऐसे सब जगह पे जीपीएस ट्रैकिंग का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। दूसरा है विजन एनालिटिक्स। अब विजन एनालिटिक्स का अभी ऑलरेडी सैलाब जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बात की थी, तो ये जो एक नया टेक्नोलॉजी है जिसका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली फॉरेन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडिया में भी अभी उसका एडाप्टेशन आ रहा है। इसका सिंपल से एक अगर हम ट्रांसलेशन करें तो विजन एनालिटिक्स से हम ये पता कर सकते हैं कि कैटल का जो है बिहेवियर क्या है, कैटल का जो हेल्थ स्टेटस है वो भी हमें पता कर सकते हैं। अभी स्वीडन में एक रिसर्च चल रहा है कि हम कैमरा का प्रयोग करके कैटल का जो इमोशन है वो ट्रैक करते, कैटल खुश है, उदास है, या उसका मूड ठीक नहीं है, तो ये सब तक हम कैमरा द्वारा, विजुअल एनालिटिक्स द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। तो इसका जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फ्यूचर में जो है कैटल के इमोशन से भी कैटल का रिप्रोडक्शन साइकिल पे उसका इफेक्ट पड़ता है, उसके प्रोडक्टिविटी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो और प्लस विजुअल एनालिटिक्स कैटल का जो आइडेंटिफायर है वो भी है, मतलब एक कैटल का जो पर्टिकुलर आइडेंटिफायर्स होते हैं उसके हिसाब से पता कर सकते हैं कि हाँ हर एक कैटल यूनिक है, तो वो विजुअल एनालिटिक्स से बता सकते हैं कि कौन सा कैटल कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है, या उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है। उसके अलावा विजुअल एनालिटिक्स में एक और पार्ट है जो कि थर्मल इमेजिंग जो कहते हैं वो एक्चुअली जो कैटल का जो शारीरिक तापमान है उसको मॉनिटर करता है। तो वो अगर ज़्यादा है तो हमको पता चलता है कि ओके जो गाय है वो स्ट्रेस में है या उसको हीट स्ट्रेस हो रहा है, या उसका उसका एक्सटर्नल टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है। तो जब कभी कैटल का एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसका प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप HF को लेकर अगर आप केरला में जाके HF फार्मिंग शुरू करोगे तो केरला का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो HF कैटल के लिए वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए। तो हमारे यहाँ पे एक फार्मर HF कैटल लेकर आए थे और उसका प्रोडक्टिविटी जो है 10 लीटर पर डे से गिर के 2 या 3 लीटर पे पहुंच गया, और वो इतना बीमार हो गया वो कैटल कि एक दिन तो वो उठा ही नहीं, कैटल बैठ गया।
सो दैट बिकेम अ प्रॉब्लम। तो पता चला कि वो हीट का जो इफेक्ट है वो कैटल के बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और कैटल को अगर सही टाइम पे अगर हम उसका बॉडी टेम्परेचर जो कंट्रोल में ला लें तो उससे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, उसका हेल्थ स्टेटस, ओवरऑल उसका हेल्थ स्टेटस बढ़ता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए और जो कि फॉरेन में इम्प्लीमेंट हो चुका है। उसके अलावा आता है ड्रोन्स। ना ड्रोन्स का आपने सुना होगा कि ड्रोन्स काफ़ी तरह के ड्रोन्स होते हैं, मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं और कमर्शियल ड्रोन्स होते हैं। तो अभी एक नया जो वेव आ रहा है उसमें ड्रोन्स का यूज़ करके हम हर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अगर आप हिली एरिया पे गाय को लेके जा रहे हो और ऑब्वियसली आपको हर जगह मौजूद होना आपका मुश्किल है, तो ड्रोन से आप हर्डिंग कर सकते हो। ड्रोन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कैटल कहाँ पर है, क्या कर रहा है वो कैटल, या फिर कई कैटल गुम हो गया तो आप ड्रोन से ट्रैक कर सकते हो कैटल कहाँ पर है। उसके अलावा ड्रोन का एक और यूज़ है जो मैंने अभी थर्मल इमेजिंग कहा उसका। जैसे कि बहुत बड़ा फार्म है आपके पास या 100-200 कैटल हैं आपके पास, हर कैटल के पास जाके आपको कैमरा लगा के मॉनिटर करना मुश्किल है। तो ड्रोन की सहायता से आप ऊपर से ही हर कैटल का बॉडी स्ट्रेस जान सकते हो कि उसका क्या है, क्या उसका बॉडी का तापमान है, क्या वो स्ट्रेस में है या नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल जाती है। और हीट स्ट्रेस का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी फार्मर्स को उसके बारे में पता नहीं है, काफ़ी लोग निगलेक्ट कर देते हैं उसको। पर THI नाम का एक चीज़ है जो कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स होता है, वो कैटल के जो एक्टिविटी पे और कैटल के ओवरऑल हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर THI बहुत ज़्यादा हो, लेट्स से 68 के ऊपर THI हो, तो एक कैटल का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, उसके रूमन में इम्पैर्ड बैलेंस, जो कि बैलेंस है रूमन का, वो ख़राब हो जाता है, एसिडोसिस ज़्यादा होने के चांसेस हैं, मिल्क का ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्शन पर उसका तो इफेक्ट डायरेक्टली होता है, फीड पे उसका इफेक्ट होता है, और रूमिनेशन ऑब्वियसली कम हो जाता है। तो कैटल के जो ओवरऑल बॉडी का जो पैरामीटर्स है उसमें चेंजेस आना शुरू होते हैं और ओवरऑल फार्म की प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है। तो काफ़ी फार्मर्स को इसका आइडिया नहीं होता, उनको समझ नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि आई गेस थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि काफ़ी सारे कैटल डेथ्स हो रहे हैं नुब्रा वैली में और पता नहीं चल रहा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ है। तो इसलिए देखिए काफ़ी सटल चेंजेस फार्मर्स नोटिस नहीं कर पा रहे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। और अभी जो मैंने बताया वो IoT के बारे में था। अब IoT से हम कैटल के डे टू डे एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, वो कितना खा रहा है, कितना चल रहा है, कितने देर बैठ रहा है, रूमिनेट कर रहा है, उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, या वो पानी कितना देर पीते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। पर इस जो इन्फॉर्मेशन मिल गया उसका करना क्या है, तो उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 2 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कहा जा रहा है कि काफ़ी सालों के बाद वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे चला जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है कि जो भी डेटा मिल रहा है हमें इन सेंसर से या इन डिवाइसेस से, उसको वो प्रोसेस करके वो बताता है कि कैटल जो गाय है उसका बॉडी में चल क्या रहा है, या उसकी सेहत में क्या चेंज आ रहा है, या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारा जो सिस्टम होता है वो प्रेडिक्ट कर पाता है कि अभी अगला क्या होने वाला है कैटल के साथ, या कैटल का हेल्थ का प्रोडक्शन क्या जा रहा है, या कैटल का जो हीट का जो नंबर है वो कहाँ जा रहा है। तो उसी का एक ग्राफ जो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये AI दिखने में काफ़ी सारे ग्राफ्स और नंबर लग रहे हैं, बट बेसिकली ये जो है एक एनालिटिक्स है कि क्या कैटल के हेल्थ में हो रहा है और क्या कैटल के हेल्थ में नहीं हो रहा है। और यहीं पर जो आता है हमारा जो डिवाइस है, जो वीस्टॉक, हमारा ब्रेन वाइड में हमने जो डिवाइस बनाया है जिसका नाम वीस्टॉक है, तो उसमें 2 डिवाइस हैं। एक है ईयर टैग जो आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं, एक ईयर टैग जो गाय के कान पे लगाया जाता है, और उसके अलावा हमारे पास जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं उसे रिसीवर कहते हैं, तो वो रिसीवर फार्म के किसी कॉर्नर में लगा सकते हैं। तो ये जो ईयर टैग है वो कैटल का हर एक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है कि क्या कर रहा है वो दिन में, और उस हिसाब से वो बताता है कि वो कैटल का जो हेल्थ है वो कैसा है, क्या वो हेल्दी है, क्या उसका रिप्रोडक्शन साइकिल शुरू हो रहा है, क्या वो सिक है, या कुछ और उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वो ट्रैक करके फार्मर्स को मोबाइल, जो आपके राइट साइड में जो देख रहे हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का एक इंटरफेस है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितने कैटल हीट में है, कितने सिक है, कितने प्रेग्नेंट है, कितने मेडिकेटेड है, कितने को दवाई दे रहे हैं आप। और उसके अलावा उसका जो अलर्ट्स है, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको उसमें मिल जाएगा, आपके कैटल का फुल इन्फॉर्मेशन, और कैटल दिन में क्या कर रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन हमारा जो डिवाइस है वीस्टॉक से
पता कर सकते हैं। तो अभी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा साउथ इंडिया में चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में हमें काफ़ी सारी क्वायरीज आए तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे डिवाइसेस का बेनिफिट ये होता है कि हमें अगर कैटल डेथ भी हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों हुआ या कैसे हुआ या उसके हेल्थ में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो शायद ऐसा टाइम भी हो कि हमारा डिवाइस एक्चुअली अभी हमने जो ट्रायल्स किए हैं उनमें हम काफ़ी बार कैटल के काफ़ी डिजीज़ को हम प्रेडिक्ट कर पाए कि हाँ ये डिजीज़ कैटल को हो रहा है, उसका देखभाल करने की ज़रूरत है। सेम वे हमारा जो डिवाइस है अभी राइट नाउ हमारी जो एक्यूरेसी वो 90% के ऊपर है। तो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये कैटल को जो है कुछ प्रॉब्लम है। और हमारे पास काफ़ी टीम ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में एक चैट एप्लीकेशन भी है जिससे कि डॉक्टर्स कंसल्टेशन दे सकते हैं फार्मर्स को कि हाँ अब अगला स्टेप क्या करना है, अब आपको क्या कौन सा फीड देना है या कौन सा मेडिसिन देना है या उसका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस जो है वो ये है। तो इसका बेनिफिट फार्मर्स को लेटेस्ट स्टेज में मिलता है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि पूरा फार्म को कैसे हेल्दी रखना है। उनको गाइडेंस मिलता है कि फार्म में जो प्रोड्यूस बन रहा है, जैसे कि अगर दूध हो या लेट्स से काउ डंग हो, काउ डंग का भी काफ़ी एक अपना सेपरेट मार्केट है। तो उस सब को वो कहाँ बेच सकते हैं, कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो सब जो कंसाइज जो चीज़ है वो टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं और वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वीस्टॉक जो डिवाइस हमने बनाया है। इसके अभी तो हमने कैटल के लिए बनाया है, बट अभी हम इसके R&D में काफ़ी और प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं बाकी लाइवस्टॉक स्पीसीज के लिए। तो इसका बेनिफिट जो है सीधा सीधा फार्मर को मिलता है और इस बेनिफिट का फ़ायदा काफ़ी कोऑपरेटिव एजेंसीज भी ले सकते हैं, जैसे कि मिल्मा हो गया या अमूल हो गया या कोई भी बड़ा एजेंसीज हो गया। तो उनके लिए भी वो बेनिफिशियल है कि उनके फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उनको जो इनपुट मिल रहा है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगेन दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फार्मर्स एंड फार्मिंग। और फाइनली जो मुझे कहना है कि मेनली जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो पहले के टाइम पे कम था, आज के टाइम पे हमें नेसेसरी हो गया है। क्योंकि जितना हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे हमारे नई दुनिया में, हाँ मुश्किल है फार्मर्स को पहले अडाप्ट करना या उसको समझना या उसको, बट आई पर्सनली बिलीव कि स्किल डेवलपमेंट और स्किल शेयरिंग के साथ हम जो है फार्मर्स को वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर हम जैसे कि हमारा सिस्टम जो है वो लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, जैसे कि आप महाराष्ट्र में तो आपको मराठी में मिलेगा, गुजरात में तो गुजराती में मिलेगा, केरला में तो मलयालम में मिलेगा। तो उस तरह हम लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करके फार्मर्स को सिंपली बता सकते हैं। और ऑब्वियसली फील्ड एजेंट्स और वो सब फार्मर्स के साथ काम करके, डॉक्टर्स वेटनरी डॉक्टर्स फार्मर्स के साथ काम करके जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो बदल सकते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्टिविटी ओवरऑल है वो बढ़े। क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है वो इंडियन जीडीपी का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी हमारे जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स है वो उतना कमा नहीं रहे हैं। जिनको अच्छे से आता है वो आराम से कमा पा रहे हैं, पर जो स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं वो ज़्यादा इनकम नहीं कमा पा रहे, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जब वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट उनके प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा, जिसका रिजल्ट से उनकी जो आमदनी है वो जो उनका इनकम है वो बढ़ेगा, अपने आप को थोड़ा और इवॉल्व कर पाएंगे। और उसी से एक्चुअली विलेज लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट शुरू होएगा, क्योंकि जो फार्मर्स है वो अपना फार्म बढ़ा पाएंगे तो और लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काफ़ी लोग उनके साथ काम कर पाएंगे, काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर होकर खुद अपना फार्म शुरू कर पाएंगे। तो इसका जो है वो सीधा सीधा इफेक्ट फार्मर्स की लाइफ पे और हमारे रूरल कम्युनिटी पे पड़ता है। जैसे कि हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कि गोकुल मिशन के साथ हो गया या कैटल प्रोडक्टिविटी के साथ हो गया, तो वो मिशन हम सक्सेसफुल कर पाएंगे अगर हम उसका टेक्नोलॉजी के साथ हम उसको कंबाइन करेंगे। तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद दिस सेशन की IoT और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इंपॉर्टेंस एक फार्मर के लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, और जितना हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उतना हमारा बेनिफिट ज़्यादा और आगे जाते वक्त बढ़ेगा और उससे हम अपने इनकम भी बढ़ा पाएंगे। सो या थैंक यू गाइस। Thank you, Sri Shankar, for joining us and being patient, because you had to wait for 1.5 hours for your turn, so we got delayed. But yeah, thank you very much. Sri Shankar, you talked about how IoT can be helpful in determining animal health, traceability, surveillance, and how UAVs can be useful in herding or thermal imaging of for the body stress in animals. And collectively all these information from IoT sensors and UAVs can be collectively fetched into the artificial AI based algorithms for analytics in cattle management and decision making.
and finally, empowering, enabling the farmer to take decisions about the cattle. Really informative talk, I must say. And yeah, congratulations for your startup, your venture. And recently, I got to know that you featured on TV. Definitely I'm going to watch that show now. Yeah. One question we have received in chat that what are the ethical implications of using such an advanced technology for insertion of sensors in cattle? And does this advantage have any side effects as benefits you had mentioned in presentation? Please bestow some wisdom on it. Personally, cattle tracking, GPS and health tracking are most likely can be adopted in Ladakh as we have. So they are happy to adopt this technology, but they are talking about, he's want to ask about the ethical issues related this. True. So basically, so there are devices which can be inhaled by the cattle, and they go into the rumen, and they're made by biodegradable materials, so that can be so there are no side effects to that, because after some point of time it naturally comes out of the system, and in form of dung or something. In terms of what we are doing, so what we have designed is an ear tag. So it is placed on the ear of the cattle, and ear tagging is a mandatory process by Government of India. So if you have seen the yellow colored ear tags that is placed on the cattle ear, it is a mandatory process. So ear tagging, there is no side effect because it is just normal for cattle. Initially for 1-2 days, they might feel something, but after that they get used to it. And the applications of that in GPS or everything can be done with this device itself. It can track the location, it can track the health of the cattle. So that itself creates a whole ecosystem. We might not need another sensors, specifically if you take the Indian ecosystem, because the major diseases can be done by this. So yeah, so this is something that is no side effects or something like that. The cattle get used to it, and it's a normal process. Every cattle owner does it. Okay. Another question. Since we have marginal farmers like who have like 10 animals. So the question is, what would the estimated cost say for 10 animals for GPS tracking with these ear tags installed? Yeah, so basically the prices vary depending on what solution you're adopting. So there is a health monitoring system. If the whole health monitoring system is taken into place, the price per device comes around 2,000 rupees. If you just take GPS only, then it can be anywhere below 1,000 rupees. If you take in just GPS, then again, depending on scale. So right now the device that we have is a health monitoring system. It is a complete system wherein doctors consultation, everything is included. So that comes at around 2,000 rupees. So it changes depending on what all features you're opting for. So there is a customizability option. So yeah, so that is there. Okay. So Shishankar, very mean question from my side. We are establishing an STI hub in Ladakh. Okay, with government help. So my question is, how can we collaborate and we can have your technology demonstrated at STI Ladakh so that farm, because we are organizing such program where farmers can come to our lab and can see many devices, because we have collaborated with many developer innovators who developed such technologies with the help of DST or DBT or PIRAC, like somebody in BITS Hyderabad, somebody in IIT Delhi, somebody in IIT Madras. So how we can come together to demonstrate your technology in Ladakh, because people are asking how they can contact, how they can get trained in your technologies, and so we want to ask how we can have your technology in Ladakh. Yeah, sure. I mean, we are, so as I mentioned, after the TV episode, we have been getting a lot of interest from Ladakh and Northern Belt, and we want to have our presence there. So definitely we can have a team of, like, including me, and we can have a team of people, visiting your establishment, and we can bring some samples, and we can have a showcase. So we can definitely discuss that, and we can arrange for that to happen. That is not a big issue. That is not a problem that Okay. we see. So yeah, Okay. so we'll love to do that. Yeah, thank you very much for that. Because since Mohit from my team was coordinating with you,
I will ask Mohit to further see how these things can be implemented. Yeah. Sure. So with that, thank you, Shri Shankar, for joining us and talking to us, taking your time out. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you.